मेन स्टोरी कंटिन्यू करेंगे भाई। मूसा को बचाना है भाई, उसके ऊपर फालतू का एलिगेशन लग गया है मर्डर का। बाकी भाई आज रेजिग्नेशन आ गया फाइनली। धर्मेंद्र प्रधान हैज रिजाइंड। वेलकम एवरीवन टू किंगडम कम डिलीवरेंस 2। Henry? What are you doing here? Grozov said... Nah, to hell with Grozov. Katz believes you didn't do it. We have to clear your name somehow. I truly appreciate that. But I am not sure that is possible. Tinja sireye, mene mene sireye. What? It is a proverb from my country. It means the road to truth has many twists and turns. Well, we'll straighten them all out. Don't worry. I'm gonna need your help. What happened when you brought Chertan to the infirmary? I already told you everything. We laid him on the table. Crow went his own way and I started cleaning Chertan's wounds. Then I gave him some wine to drink. And he suddenly began to shake and vomit blood soon after. He was dead. And what happened next? Then the noble lord of Borumlaka arrived and started to go mad. Did Chertan say anything before he died? He tried to, but my Hungarian is not as good as I thought. He was coughing so much that I could not understand anything. What about that wine? Could I take a look at it? Lord Grozov poured it away in anger before you arrived, so that I could not poison anyone else, he said. He poured it away? When it could have helped us? The wine was evidence. Evidence that here in Bohemia you will drink even vinegar. It smelled and looked the same, as always. Except perhaps it was a little more cloudy. Where was the wine from, actually? A bathhouse maid brought it to me along with my clean laundry. A very pretty girl. Black hair, nicely built. You Catherine, है क्या? I think. अबे Catherine? Are you sure? Absolutely. But I doubt that she was mixed up in this. Chertan was not the first person I gave the wine to today. The wine must have been poisoned here, in my infirmary. All right. But what now? How will we find the murderer? I have done some thinking about that. After all, what else can I do here? The best thing would be to investigate the poison. Every poison has different effects. One makes your hair fall out. Another turns your guts inside out. If we discover what poison was used on Chertan, we just have to find it, and the mystery is solved. How can we identify the poison, then? That is not hard. I examine the dead body, I find the symptoms of the poison, and I compare them with known effects of poisons. That is, I would, if I could get out of here. And could I help you somehow? Can't be that hard, can it? Certainly not. Why study something for years
and common sense is enough. I'm sorry. That was not courteous of me. I am sure you will manage somehow. The first thing to do is to go to Chetan's corpse and examine it thoroughly. Arms, legs, face. You must remember everything that looks strange to you. In the infirmary, you'll find a chest. Take from it my almanac of poisons and compare what you saw with the symptoms described there. You can read, I hope. Aye, pretty well. Excellent. The chest is locked. But I trust you will manage somehow. You have a whole book just about poisons? Where did you get it? I bought it on my way here, in Moravia. I have not yet had time to study it properly, but please, do not mention it to anyone. It would not look good for someone in my situation to have such a book. You surely understand. Right. Examine Cheriton's body and read the book. I can manage that. What if we forgot about finding the murderer, and I just helped you escape? You'd be long gone before Grozov found out. Thank you for the offer. But look at me. My appearance is a little conspicuous. There is nowhere for me to hide in this country. And even if I did get away by some miracle, they would punish you and Cats instead of me. I cannot allow that. Who do you think killed Cheriton? I have no idea. But what I do know is that we will not get anywhere if we suspect everyone in the camp. Who do you think is the prime suspect at this moment? I heard Sir Grozov couldn't stand Cheriton. I have heard the same. And did you notice how Why? quickly he accused me? Well, what do you think? And I would bet that it was one of us who was there at the time. And because it cannot be you, me, or Katz, that leaves Grozov, Stephen, and the two guards. Someone should question them all. Maybe their statements will give something away. Well, I don't have much time, but I'll try to talk to them. I am very grateful, my friend. ठीक है भाई इन्वेस्टिगेशन। अब हम लोग को मर्डर ढूंढना है भाई। किसने किसने मर्डर किया है हमें अब ये पता लगाना है। आई होप इस बार मैं सही कर पाऊँ। और मैं मूसा को भी बचाना है मैं भाई, क्योंकि मूसा तो देयर इज नो वे कि उसने किया हो। आई डोंट नो किसने किया है, बट आई विल होप वी विल फाइंड आउट सून। Don't think I can't see you. Careful. Same to you. Good doggy. Good boy. Good day. Good day. Good day.
यार कितनी गंदी राइटिंग है यार, ये बहुत अजीब अजीब तरह से लिखते हैं ना, मुझे नहीं पसंद। राम राम। राम राम गौरव भाई, आज ओबीएस ने और इंटरनेट ने मार ली मेरी सीन्स की, बताया आपने। कोई ना, कल करना, सही हो जाएगा। सही में भाई, मुझे एक ओबीएस एक्सपर्ट चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। अरे शुभ भाई है ना, ये कोई भी पीसी स्ट्रीमर होगा, काम कर देगा आपका। वरना मैंने आज क्रिकेट 19 भी इंस्टॉल कर लिया तो उसकी लाइव स्ट्रीम करता। अच्छा, आप वो भी खेलने का प्लान में थे? चलिए, लेकिन क्रिकेट 19 तो अब थोड़ा मुझे लगता है आउटडेटेड हो गया होगा, उसमें न्यू टीम्स क्योंकि नहीं आती होंगी। 26 चल रहा है तो 19 पुराना ही लगा होगा। Right, I've learned something about poisons. Now I should examine Chertan's body. हाँ भाई, बात तो सही कह रहे, इसलिए जब क्रिकेट 26 सेल पे आएगी तब लूंगा उसे, क्रिकेट 19 हटा दूंगा। हाँ, आइडिया अच्छा है। All right, here we go. Holy Mary, Mother of God, don't let me miss anything, and forgive me for what I'm doing to this unfortunate wretch. He looks a bit ruddy. Is that from the poison?
Or was he just drunk? Ah, what a stench. Coughed up some blood, all right. But he also threw his guts up. Ugh. There's no way I'm examining that. It looks horribly rigid and contorted. He must have died in awful spasms. Nothing strange here except the stiffness and broken nails. Could he have dug his nails into the table when the spasm started? And what's this here? Something that looks like warts. But did the poison cause them? Or was he a filthy pig and always had them? Completely rigid. Just like the arms. But, oh, Christ, what a stink! Ugh, he shot himself. I've heard it happens to the dead, but that much? Ugh. Maybe the poison did that. कौन सा poison होगा? That's a nasty wound. I almost feel sorry for Cherton. Why would someone kill him in the most heavily guarded part of the camp, instead of trying to lure him outside? Several stab wounds in the belly, all close together and very deep. The murderer definitely knew what he was doing. Though that hardly narrows down the field in an army camp. Almost everything is covered in blood. But there doesn't seem to have been much of a fight. I can't see anything ripped or sliced off. There's nothing missing. Whoever killed him doesn't look like a robbery. That'll have to do. I've found out enough. He had spasms, he shot himself, warts or lesions on his hands, as red as a poppy. But that could be from drinking, or lots of things. I mustn't forget anything. That's the main thing. I better examine him one more time. Right then. He had spasms, he shot himself, warts or lesions on his hands, as red as a poppy. But that could be... I mustn't forget anything. I read that book of yours, and I think I know now what Chertan was poisoned with. What do you mean, you think? Do you know or not? को यार kiss of death. The potion is called Kiss of Death. It causes vomiting, cramps, boils, and rapid death. This name means nothing to me. I suppose I did not get that far in the book, but if you think the symptoms are the same, I will believe you. Are you sure it was that poison? Were there not more in the book? एक बार फिर सोच लेता हूँ.
Absolutely certain. The murderer couldn't have used anything else. All right. I have no choice but to believe you. Now, we can only hope that the murderer has not had time to get rid of the evidence. Better start searching fast, hadn't I? You said that the suspects are Grozov, Crow, and the 2 guards. This won't take long. Wait a moment. There is something I must tell you. Of course. Go on. First, you should know that I am grateful for what you are doing. Were it not for your investigation, I probably would not be standing here. But I cannot stop thinking about how brilliantly you dealt with Mishek. Why would someone with your abilities want to enlist? I do not suspect you of Teretan's murder, of course. Do not worry. It is all strange, though. People have just been sitting around for months here. And all of a sudden you turn up, and everything is turned upside down. Well, that's a good thing, isn't it? Tell me the truth, my friend. Who are you? Really? I don't know what you're talking about. Is this some kind of loyalty test or something? I'm just doing what I'm told to do. Is there something wrong with that? I have more important things to do than to try to trick you. I am asking you sincerely, as a friend. Who are you? All right. I'll try to trust you. Maybe I'm not King Sigismund's most ardent supporter. I knew it! I could tell straight away that you were cleverer than others in this camp. You're pleased? Aren't you a courtier of his? It was not my first choice. Or do you think I long to spend half my life in some dirty tent? How did you come to be in Sigismund's court? That is a long story. I once served Sultan Bayezid. Although the Osmans are not that welcoming to my people, the Sultan at the time received envoys from all over the world, so I was useful. But soon after, we found ourselves at war with Timur and his Golden Horde. Luckily, that is, luckily for me, it was around then that Sigismund's messenger came to see the Sultan. And I managed to persuade the Sultan to send me to Hungary as a goodwill gesture. I am sure you understand that I did not want to wait for Timur's savages to cut my head off. But let us just say that King Sigismund did not show me the respect my position is worthy of. Instead of making me his counselor and physician, he sent me here. Well, you could go elsewhere if you don't like it here. I know a few people who would value someone like you. I am grateful to you, my friend. But I must refuse. I have had many experiences in life and come out of them alive. And do you know why? Because I am a total coward. And not just that, I am duly proud of it. I would be very happy to get away from here, and perhaps even return home, but only when I am sure I will survive the journey. So I think it will be best if we each go our own way. You know nothing, I know nothing. And this conversation Never took place. place. I better go and search the tents. Good luck. I am depending on you. Beautiful, but empty. No poison. I wouldn't mind a piece of that. For pain, exhaustion, fever, all healing remedies.
I'm sorry. There's nothing here. Moose is definitely not to blame. मूसा इज नॉट टू ब्लेम, यस वो नहीं है यार, आई एम श्योर कि वो नहीं है, उसके अलावा ही कोई है। He's the camp commander, but it looks like a pauper lives here. I reckon Grozov's fallen on hard times. Oh, that's valerian, I believe. It helps relieve pain, but it's also used to make dollmaker potion. But Chertan was poisoned with Kiss of Death. Or was he? Could we talk about Chertan's murder? Why? Musa is under lock and key, and the king's deputy himself is coming for him. Leave me in peace, or you might end up like him. But sir, we both know whatever happened with the poison wine, Musa can't have stabbed Chertan. I want to find out who else is involved in this. After all, you too could be in danger till this is all cleared up. I just have a couple of questions. I won't keep you long. You'll see. Get on with it then, for fuck's sake. But if you think you can persuade me to let Musa go, you're out of luck. How come you got to the site of the stabbing so quickly? My tent is right next to it, you rat-faced halfwit. I heard Chertan yelling and I went to take a look. Did you notice anything strange? Like what, a stabbed man? Maybe you saw someone acting strangely around there? No. I gave a clear order that nobody unauthorized is allowed up here. It's bad enough that you're here. Is there anything else? Or can I have some peace at last? Were you there when Chertan was poisoned? No, not at that moment. When I arrived, Chertan was already dead, and Musa was standing over him, white as a sheet. Well, paler than usual. Had Chertan been behaving strangely recently? No more than usual. Did he mention having any conflicts with anyone? Apart from me, you mean? I don't know how you imagine it, but we don't exactly go round holding hands here. Do you know anyone who might want to kill Chertan? Who wouldn't? He was a smug, ill-mannered bastard. Though I have to admit, I'm surprised it was the Sawbones Musa who killed him. How could he have? He was with me and Katz when Chertan was stabbed. So he was in league with someone. How do I know? Okay.
stinks of vomit. Just a broom. Well, I doubt that pair of drunks could have killed Chertan even if they wanted to. Nothing out of the ordinary. The water smells of flowers of some kind. Like roses? Oak. Dry as a bone. Nails. Is Crow planning on building a cottage instead of a tent? But they're covered in some kind of dirt. Hold on. Nails, rosewater, oak bark. They're all used to brew Kiss of Death. I'd like to ask a couple of questions about Chertan's murder. I have a couple of questions of my own. What actually happened? Kat said Chertan is dead and Musa's locked up. Well, it's even more complicated than that. But I don't have time to explain it to you now. I need to ask you a couple of questions. Go ahead and ask then, but quietly, damn it. I don't want anyone to know about it. Where were you when Chertan was मैं इसी पे शक जा रहा है भाई. In my tent. After I helped take him to the infirmary with Musa, I went my own way. You just went off to have a nap? No, I doubled the guard, drew up the orders for tomorrow, and made sure nobody was allowed to leave the camp. When something like this happens, people like me have lots to do all of a sudden. It was you who came to tell us that Chertan had been stabbed, wasn't it? How did you get involved in the first place? Me? I was close by, that's all. My tent is right below the palisade. And when the two guards found Chertan, they ran to get me. Hold on. The two guards said otherwise. They said they found Chertan and were discussing what to do when you turned up. By yourself. Is that what they said? It's possible. I can't remember now. It all happened so fast. And anyway, how am I supposed to remember all this shit? Maybe I heard them and went to see what was going on. Are you sure you don't want to tell me what really happened? All right. You want the truth, so I'll tell you the truth. In fact, I really was up top. It's because I had to keep an eye on you. Me? Why, for Christ's sake? You really don't know? You may have been given our colours, but you're still a stranger. I didn't want you running around unsupervised. But it seems you're a decent fella, so don't fuck it up now. Tell me more about the storage space. What about it? There's a cannon and some powder there. यही है भाई, We यही built है. it a few days after we arrived, because it's I a get- good idea to keep that kind of stuff safe. If it blew up, the whole place would be blown to smithereens. And if someone didn't happen to set fire to it, someone else might have robbed it. Folk are like magpies. Oh, except for you, the Crow. Very droll. Never heard that one before. Aye, but now I'll ask you something. Who do you think did it? Well, it's too soon to be certain. So everyone is a suspect. To tell the truth, there's something about your story that doesn't feel right. My story? Fuck. Henry, why would I want to kill Chertan? I don't know. I'm just saying that everyone is a suspect. Well, you better be fucking certain before you try landing me in the shit. Got that? I've been doing a lot of thinking about Chertan's murder. What's that got to do with me? Well, it's just that I found a couple of interesting things in your tent. Isn't there something you should tell me? No. And get off my back. Calm down. If I wanted to snitch on you, I'd go straight to Cass without bothering to ask you any questions. Well, let's say you might have a point. What was it you said? You know something about the murder, don't you? Maybe a little. But I don't want word to get out, all right?
Why would anyone kill Chertan anyway? Maybe it wasn't about Chertan. Maybe someone wanted to do something in the ammunition store. But Chertan turned up, so he had to kill him. In the ammunition store? And what would anyone be doing there? Trying to blow it sky high. What? What good would that do anyone? It might make him very rich. Let's say Sigismund has a lot of enemies who are planning something big. It will start in Italy, I hear, and it'd come in very handy if someone gave the king a setback before that. He'd lose allies there, and here his camp goes to shit. There's sure to be dozens of saboteurs all over the Empire, just like the one here. I should probably report you. I've got a much better idea. Let's say I'm not a great supporter of Sigismund. What if we were to help each other out? That doesn't sound bad. Let me finish my work. We can put the blame for Chertan's murder on Grozav. I can't stand that fucker anyway. What, accusing an innocent man? He'll be executed. Better him than me. So, can we make a deal? And what if I refuse? It's a bit late for that now. I have a poisonous plant here. Take it and put it in the chest in Grozav's tent. At the trial, we'll say he used it to poison Chertan. And if you don't want to end up like Chertan, you do well not to mention me to anyone. Is that clear? Here he is! Give it to him! Where the heck? Give up. What's that you're taking away? I surrender! You thief! I've got it in for you. It's time for you. You're lucky you didn't. But I acted with... I received permission to do all of that. I'll bring you the contract. Well, Nah, a foolish question. I apologize. So, do you want to see the contract? no, no. Nails? Is Crow planning on building a cottage instead of a tent? I'd like to ask a... Go ahead. Where were... When some... It was... Hold on, they said... And anyway... Are you sure? Oh, Me? you... But it's... I found lots of black powder in the ammunition store. Someone scattered it all over the floor. Again?
Hardly a day goes by without that happening. The lads are lazy, and instead of carrying the barrels inside like they were told to, they roll them in. But don't worry, I'll have a word with them. I'll make sure they clear it up before we're all blown sky high. Aye, but now I'll ask you something. Who do you think did it? Well, I don't know. Well, I've been doing it. what's that? It's just that. No! Calm down. If I wanted to snip... Well, let's say you might... You know something about the murder, don't you? Maybe a little. But I don't want word to get out, all right? Why would anyone... Maybe it wasn't about In the ammunition... trying. What? It might make... Let's say Sigismund has a lot of enemies who are planning something big. It will start in Italy, I hear, and it would come in very handy if someone gave the king a setback before that. He'd lose allies there, and here his camp goes to shit. There's sure to be dozens of saboteurs all over the Empire, just like the one here. I should probably report you. Let's say I'm not a great supporter. Let me finish my work. We can put the blame... What, accusing an innocent... So, And what if I refuse? it's a bit late for that now. I have a poisonous plant here. Take it and put it in the chest in Grossow's tent. At the trial, we'll say he used it to poison Chertan. And if you don't want to end up like Chertan, you do well not to mention me to anyone. Is that clear? क्या करना चाहिए भाई? It's true I'm not on Sigismund's side, but भाई क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए भाई, बहुत कंफ्यूजिंग है। आई मीन ये बंदा है मेरी तरफ, ये स्टीफन क्रो जो है, ये बंदा है तो मेरी तरफ, मतलब ये भी एक स्पाई है, तो बेसिकली अभी सिगसमंड के खिलाफ है जैसे कि मैं हूँ। बट एट द सेम टाइम दूसरा बंदा नॉट 100% इनोसेंट, बट गलत तो नहीं है। क्या करूँ भाई, बहुत कंफ्यूजिंग, मतलब इट्स अबाउट चूजिंग कि किस मोरालिटी की तरफ जाऊँ। और गेम ने मुझे एक तरह डबल तरफ से फंसाया है यहाँ पे।
और बताओ मिस्टर पैरासाइट, मैं एक बहुत बहुत तगड़ी क्वेस्ट में हूँ, मैं आप ही का वेट कर रहा था कि आप आ जाओ। थोड़ा मैंने सोचा इस क्वेस्ट में क्या करना चाहिए। मेरा पहले तो मैं कुछ करने का सोच रहा था, अब मेरा डिसीजन चेंज हो गया है। तो इस क्वेस्ट में वो चरकन नाम का बंदे का मर्डर हुआ है और मुझे इन्वेस्टिगेट करके पता चला है कि ये स्टीफन नहीं मारा है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी पता चला है कि ये स्टीफन जो है ना वो सिगसमेंट की तरफ नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ वो ग्रोजनॉफ नाम का जो बंदा है ना उसको उसको फ्रेम कर दूं, क्या बोलते हैं, मर्डर के लिए। और ग्रोजनॉफ कोई सीधा आदमी तो है नहीं, है तो सिगसमंड का ही मारता है, वो भी और लोगों को। वो भले ही इस जगह पे वो इनोसेंट होगा, बट नॉर्मली तो वो मर्डर्स करता ही है। और वो भाई वो मूसा पर भी वो ब्लेम डाल रहा है। मेरा तो मतलब पर्सनल थॉट प्रोसेस जो रहा है ना, मुझे यही लग रहा है शायद मुझे थोड़ा मतलब रियलिटी को छोड़ के एक दूसरे आदमी पे ब्लेम डाल देना चाहिए जो एक्चुअल में हमारी तरफ, क्योंकि वो नहीं है और वो वैसा भी कोई इनोसेंट तो है नहीं। या स्टीफन पे भी मैं डाल सकता हूँ, बट सीन ये है कि ये एक स्पाई है और ये हमारी तरफ है, वेंसेस्लास की तरफ है एक तरह से। सीधा तो ये भी नहीं है, लेकिन यही है ना कि यहाँ पर अब ये आ गई मतलब गेम ने अब डबल मोरल ला दिया है कि किसके ऊपर ब्लेम डालें। या तो मैं रियल मर्डरर पे डाल दूँ जो कि हमारी तरफ है, या तो मैं एट द डिड द सेम एंड क्लाइमैक्स ऑफ ग्रेट। आपने क्या किया था, वो ग्रोजनॉफ पे ब्लेम डाला था। मैं वही करने का सोच रहा, पहले तो मैं नहीं करता, लेकिन मैंने थोड़ा रोक के थोड़ा हिस्ट्री कोशिश करने जान, थोड़ा सोचा, थोड़ा सा लिखा विखा क्या करना चाहिए। मतलब इधर उधर तो मेरे को भी यही लग रहा है ना, बेटर यही होगा मैं ब्लेम डाल दूं उस पर। वो उसने भले किलिंग नहीं किया है, नो उसने नहीं किया, बट भाई ये बंदा तो मेरी तरफ है ना, ये बंदा है तो मेरी तरफ। वो ही इज अगेंस्ट सिगसमेंट, ही इज विथ मी। अब वही है, अगर ये मेरी तरफ नहीं होता ना तो मैं नहीं करता, लेकिन ये मेरी तरफ है एक तरह से। वो दूसरा बंदा जो है भाई वो वैसे वो उसने मूसा को बिना मतलब के ब्लेम किया, उसकी वजह से मूसा फंसा हुआ है। उसने ही मूसा को फंसाया है, स्टीफन ने तो फंसाया भी नहीं है, स्टीफन तो चुप ही है। आपके हिसाब से क्या ही करूं मैं भाई सोच रहा हूँ जहां पर गेम ना मोरालिटी का एक ज्यादा टेस्ट ले रहा है भाई। जहाँ गेम ज्यादा ही वो टफ चॉइस दे दी गेम ने मुझे। वैसे यू कैन ब्लेम एंड लेट मूसा डाई टू। ब्लेम एंड नहीं, वो तो मैं नहीं करूंगा यार, मूसा को मैं नहीं मरने देना चाहता पर्सनली। मूसा को मैं इसलिए नहीं मरने देना चाहता, वो एकदम सीधा है भाई, क्योंकि इस केस में मैं स्टीफन या इसमें से ही किसी एक को मरने दूंगा, बट आई डोंट रेकमेंड इट। अरे आई विल नॉट भाई मूसा को तो मैं नहीं मरने दूंगा भाई, वो पूरे कैंप में वही मुझे एक अच्छा आदमी लगता है। बट स्टीफन का क्या है कि बिकॉज ही इज मुस्लिम मेरा रिलीजन वाला कोई रीजन नहीं, मेरे को बस उसको यार स्टीफन को मैं करना मेरा प्लान यही था कि मैं स्टीफन को ही ब्लेम करूं, बट सीन ये है ना वो मेरी तरफ है एक तरह से, वो इस वॉर में मेरा ही साथ दे रहा है। और वो सिगसमेंट के कैंप में जितने भी लोग हैं ना वो कोई सीधे साधे तो है नहीं। आप उसको मारोगे तो एंड में वो फट जाएगा, जोक था बता देता हूँ।
अरे यार, तो भाई व्हाट वुड यू रेकमेंड टू मी? मैं किसको ब्लेम डालूं? मैं वो उसको ब्लेम करूं जिसने मर्डर नहीं किया, या उसको ब्लेम करूं जिसने मर्डर किया है? यार बहुत गेम ने टफ चॉइस दे दी यार, ये वाली एक्चुअल में बहुत टफ चॉइस दे दी। Careful. I'm on guard. My अबे यार मादरचोद डिस्कनेक्ट क्यों होता है? अरे यार चूतिया फोन, चूतिया फोन। बफरिंग 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 बफरिंग। मत कर, मत कर लाला, मत कर। अरे यार चल जा, अनॉय मत कर। अबे यार Musa said that Chertown was poisoned with wine you brought to the infirmary. It's not your doing, is it? Do you think I'm stupid enough to spoil my own plans? Was there anything strange about that wine? It's the same gut rot everyone in the camp drinks. Musa said it looked cloudy. I don't know anything about that. It was clear when I took it to him. Oh, unless... Unless someone mixed some poison into it. I think I know how Chertown was poisoned. Good work, Henry. You're too smart to be a soldier, but like every man, you prefer boasting to hard work. Go and find that murderer so we can get out of here. Shishka is waiting for us. Well, I think you already know everything important. I'd better be off. Ah. तो डिसाइड किया हु टू ब्लेम। भाई सही बताऊं यार, मेरे को तो लॉजिकली तो मुझे यही लग रहा है ना, बेटर तो यही होगा इसको ब्लेम करना। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये भी चीज़ चलती ना कि मैंने कहीं ना कहीं सिस्टम को फेल कर दिया। ये भी दिमाग में आता है मेरे, प्लीज सिस्टम तो ऑलरेडी फेल्ड भी है। मैं मुझे लगता है ना, मतलब है कि मैं जिसको ब्लेम कर रहा हूँ है तो वैसे बुरा आदमी, देयर इज़ नो डाउट, बट सिस्टम को कहीं ना कहीं फेल कर रहा हूँ। और मैं फिर अगर जिसको मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, और जिसको अगर मैं आप उसको ब्लेम कर दूँ जो सच में कल्प्रिट है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मैं तो क्योंकि जिसको मैं ब्लेम कर रहा हूँ, अगर मैं कल्प्रिट एक्चुअल कल्प्रिट को ब्लेम करूँ बेवकूफ़ी, वो कल्प्रिट भी तो हम उसी पर्पज से यहाँ आया है जिस पर्पज से हम यहाँ आए हैं। उसने वो मादर चोद है यार, ये वाईफाई कुत्ता डिस्कनेक्ट कर जाता है फोन में, चूतिया साला भोसड़ी का चैट। आई थिंक आई एम गोइंग टू ब्लेम भाई। गेम ने काफी कॉन्शियसनेस की चाम हो दी है मेरे। Hey, you! Have you done something I should know about? Don't worry. I'm a saint. You'd better be.
भाई क्या गांडू लोग हैं। क्या रखना है? अरे फेक एविडेंस क्या है भाई?
कर दिया भाई फ्रेम। अब देखते हैं आगे क्या होता। Come here. बेटा फ्रेम कर दिया इसको, अब इसी यही मरेगा। जा बेटा, कुत्ते की मर मर मौत मर भोसड़ी है। मूसा को ब्लेम करने के लिए कुत्ते की मौत मर। अरे मेरा टेंट कहाँ है, मतलब जहाँ पे मेरा बेड होता है। I'm sorry. God be with you. What would you like? Huh. What are you doing here? That's what I'd like to know. They just came and said I should guard the physician and not let him out of my sight. Even if he wants a piss, I have to go with him. You wouldn't happen to know what's going on, would you? Well, if I was you, I wouldn't ask too many questions. You might hear something you'd rather not. Aye, right. You know fuck all, and you're just trying to sound important. Clear off, and this time for good. Excuse me. Stop, you bastard! Nobody's allowed in here. But Katz himself sent me. I'm supposed to give a message to Musa. And I was put on guard here by Grozov. Nobody's allowed to see Musa.
Wouldn't you rather go and have an ale? You won't miss anything here. Actually, that's not a bad idea. That Moore can look after himself. Well, this may not be the right time, but You are quite right. ये सब पूछ चुका हूँ ऑलरेडी. King Wenceslas. Careful. right. I found out all I could. I reckon I'm as ready for the trial as I'll ever be. My word, you're bristling with confidence. We still have some time, so calm down, or you'll give yourself a fit. In the meantime, I'll go and get everything ready. Well then, gentlemen. I understood from your letter roughly what happened, and I trust we can settle the matter quickly and quietly. But before we get started, I have to say you've disappointed me, Sir Grosov. King Sigismund placed his trust in you, but you don't seem to be up to the task. That's not true. I took a few tattered tents and turned them into a proper military camp. Everything here is as it should be. Only your soldiers seem to die from time to time, eh? There are always problems, but as you can see, I can deal with them. We caught Musa of Mali in the act. You just need to pronounce judgment. Musa is innocent. Christ, Henry, be quiet. And who might you be? That is Henry, sir. One of my best soldiers. He just doesn't know when to keep his mouth shut. Let him speak, then. I'm sure he has something very important to tell us. Tell me, lad, why is Musa innocent, in your opinion? Sir, people don't murder each other for no reason. They murder mostly for revenge or profit. And Musa had no motive. You can ask everyone in the camp. Musa never had any quarrel with Chertan. But if it wasn't Musa, who did kill Chertan? Chertan was killed by the camp commander, Grozov of Boromlaka. What? You scum! How dare you! Silence! You aren't gonna let this peasant insult me, are you, sir? You should cut him down to size. That can wait. First, I want to know how he came up with this insolent claim. And start at the beginning. What happened that night by the powder store, by your reckoning? Well, being in charge of the camp wasn't enough for Grozov, most likely. He wanted to get rid of Chertan and take command of the Cuman forces. What is this nonsense? What would I want with those heathens? What's more, they'd never take orders from someone like you. I hope you know something, lad. Because if it turns out you're just wasting my time, what happened next? You carried Chertan to the infirmary? Isn't that right, Sir Musa? Yes, sir. There, I gave him wine to drink, and I prepared to stitch his wounds, but he died before I could. It seems someone poisoned the poor fella. Grozov went to the infirmary a little before me and Cass. He could easily have had time to poison the wine Musa gave to Chertan. What say you, Sir Musa? It cannot be ruled out. Well, Sir Grozov, what actually happened? Why are you all still listening to that dung grubber?
Where would I get hold of poison? You brewed it up yourself. You have lots of poisonous plants in your tent. You can go and see for yourself, sir. He has a chest full of them. You fucking liar! Silence! I've heard more than enough. Sir Grosov, you will come with me. Me? The king will not stand for wrongdoing among his nobles. That must be punished. But I didn't do anything! Don't make this harder than it need be. Keep away from me! Calm now, sir. Calm down. Shut up, you worm! It's all your fault anyway! I won't let you put this on me. You hear? You're mine! True blood, yeah! I wouldn't say that. We've rid the king of one idiot. It's just a pity Cherton had to die because of it. And I apologize to you, Sir Musa, for the unpleasantness you suffered. My head will remain on my shoulders. That is the main thing. What will happen to the camp now? That is not your concern. I will personally take command. You just get rid of the corpse and clear out the royal tent for me. With pleasure. We won't be staying long anyway, will we, Henry? As you command, sir. Then I do command, soldier. Go and pack. लो भाई Have I झूठ got बोल के time to बचा stop लिया by the baths? There's something I need to sort out there. All right. But hurry. I don't intend to make the journey in the dark just because you want to dip your wick one last time. What's wrong with Hand you? for that. You can't rob the dead! You robbed that dead man! Help! I need help, folks! यार भाई ऐसे जब आते हैं ना मोरल की बात चोद दो बैठ चोद Everything all right, Sir Stibor? No need to worry. Just because I spend all day sitting on my rear end doesn't mean I've forgotten. I'm sorry. गाय भी घूम रहे I'm sorry. I wasn't paying. You shouldn't be walking around like Can I ask you something? There's something I've been wondering about for a while. And do you know there's something I've wanted to ask you for a long time too? Go ahead. I have nothing to hide. All right then. You know, I don't know that much about you. Where are you from? What about your family? I grew up in Skalitz. It was a small mining town on the Sasau River. My father was a blacksmith. Was? Was. One day Sigismund's army came. Now he's dead. I managed to escape, but my father, Ma, Bianca... I'm sorry. I didn't want... No, it's all right. I ran, and our master, Sir Radzig Kobyla, took me into his service. And then it turned out that my father was not actually my father. But Radzig was. What? I know. It's a bit complicated. Well, and here I am, in the service of a lordling who always has one foot in jail.
I reckon each of us has a cross to bear. It's just some people can talk about it, and others can't. I'm sorry about what happened to you, believe me. I mean it. But I admire you for telling me. I don't think I could have done so. Thank you. She can get it. Yes. Welcome by Omkar. So what do you know about Zizka's past? I don't know what to tell you about him. After all, you can just ask him yourself, can't you? All right. But what's it like working for him? It's liberating. Yeah, that's the right word. It's bloody liberating. He's definitely not a bastard who would betray you for coin, if that's what you're wondering. Good to know. Aye. Jan is simply a man who goes after what he wants with a sword in his hand. If he ever wants to kill you, he will. Nothing much. क्या हुआ भाई? हटा क्यों दिए? But not by stabbing you in the back. Trust me on that. वो दिख गया बाबू मेरे से ऑनरेबल ड्यूल किया था उसने. I already told you everything about me. So what about you? Will you tell me now where you met Zizka? What brought you together? I'm sorry, but I चोर से just डर लगता है. can't. क्यों? Please, चोर ने क्या don't कर take दिया? it the wrong way, but don't ask. चोर कहीं पर भी हो सकता है. भाई चोर ना 24 घंटे इधर उधर स्टॉक करता रहता है भाई स्ट्रीम्स पे. About this. It's happening. The Praggers are leaving for Sedlets. At last, I won't have to wash the humans' asses anymore. वो सही टाइम पे आया स्ट्रीम पे. वेलकम भाई लियोन, क्या हाल है? एसएस ना ले ले मेरी चैट का इसलिए. भाई पता चला अभी तक ले भी लिया उसने. Tell Zizka everything, so they're ready for the ambush. I will. But be careful once it all starts. I wouldn't want Dry Devil blowing your brains out by mistake. चलो इसको मैंने बता दिया. भाई टॉम हॉलैंड खुद स्पॉइल कर रहा है अब. भाई उसका हर बार का वो हर मूवी ऐसे ही करता है. पता है जब नो वे होम का लास्ट ट्रेलर आया था ना, जिसमें मतलब सारे एनिमीज रिवील हुए थे अच्छे से, तो भाई उसमें टॉम हॉलैंड, जेंडाया और वो जो नेड का एक्टर था वो तीनों बैठ के रिएक्ट कर रहे थे. तो भाई उसमें एक सीन था, उसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो जो भी बुलाते उसको, मैक्स, हाँ मैक्स बुलाऊंगा मैं, मैक्स, वो लिजार्ड और सैंडमैन, ये तीनों एक तरफ थे और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एक तरफ था. तो भाई टॉम हॉलैंड भाई उस सीन को देख के बोल रहा है वेयर इज द, और फिर रुक गया. उसने खुद ही स्पॉइल कर दिया भाई कि टोबी और एंड्रू कहाँ है भाई, ट्रेलर में कट ऑफ हो गए. वो स्पॉइल कर देता है भाई खुद ही. भाई मैं तो कह रहा हूँ मत देखो कुछ भी भाई, कुछ क्लिप मत देखो स्पाइडरमैन की, वो पूरी स्पॉइल कर देंगे वो मूवी. भाई अगर मैं मार्वल के साथ काम करूँ तो मुझे भी ना खोलूँ, तो मूवी ना खोलूँ भाई. वही तो वो साला पूरा स्पॉइल कर देता है भाई, खुले आम बता देता है. इसको देखो भाई, रेस्ट इन पीस. All right, I'm ready. We can get out of here. The sooner the better. Deserters, traitors, murders. I'm getting too old for all this. But really heavy shit is still ahead of us. I can't imagine how I'm going to explain to the king that Sir Grozov, who he personally put in charge of his soldiers, is a murderer. Well, maybe it won't be so bad. And Sir Stibor will back you up. I heard Sigismund wasn't too fond of Grozov. Just he can't say it openly because the other nobles wouldn't like it. Well, let's leave it be now. Otherwise we won't get out of here before ये dawn. क्या जीसस बन के लेटा है. पता है भाई अभी हुआ क्या क्वेस्ट में लियोन, बहुत तगड़ी क्वेस्ट हुई. तो बेसिकली एक बंदे का कैंप में मर्डर हो गया, ठीक है. तो मुझे फाइंड आउट करना था कि किसने मर्डर किया. तो उसका मर्डर पॉइजन की वजह से हुआ, मतलब किसी ने उसको जहर दिया था इस वजह से. अब वहाँ पर एक मूसा नाम का बंदा काम करता है इस कैंप में, और तुम नाम से समझ जाओ वो क्या रिलीजन होगा उसका, ठीक है.
तो भाई जो यहाँ का नोबल मैन है ना इस कैंप में, नोबल लीडर, मतलब नोबल जो कि मतलब वही एरोगेंट होते हैं नोबल मैन उस जमाने के सारे, मतलब इनोसेंट्स को मारते हैं लेकिन उनका कोई कुछ उखाड़ भी नहीं पाता क्योंकि वो नोबल स्टेटस है उनका। तो भाई उसने मूसा पर ब्लेम डाल दिया कि ये मूसा नहीं मर्डर किया है। अरे भाई धुरंधर यहाँ भी। फिर सुनो सुनो सुनो, अभी मैं तुमको बताता हूँ स्पाई स्पाई वाले पार्ट पे, सुनना अच्छे से। फिर क्या हुआ कि वो क्योंकि वो बंदा मर गया था तो हमें फिर इन्वेस्टिगेट करना होता है कि उसको पॉइजन किसने किया। फिर जितने भी सस्पेक्ट्स होते हैं ना, जैसे जितने भी गार्ड्स, उन सबके कैंप को मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मुझे एक सस्पेक्ट मिलता है, स्टीफन क्रो नाम होता है उसका। और फिर मुझे पता चलता है कि उसने ही मर्डर किया है। लेकिन भाई वो मुझे बताता है ना कि वो सिगसमेंट का दोष, कि उसने क्यों मर्डर किया। वो सिगसमेंट का वो कैनन 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 देख रहा था उस पे। तो मतलब वो एक तरह से सिगसमेंट का दुश्मन ही है। वो बेसिकली हमारी ही साइड है एक वे में। तो भाई बेसिकली वो स्पाई है जो कि यहाँ पर जिसने जो अपना कवर मेंटेन रखने के लिए जिसने यहाँ पे एक बंदे को मर्डर किया, और अब वो मर्डर फैल गया है। तो भाई उसने हमें हमें बोला कि भाई तुम भी सिगसमेंट के खिलाफ हो, मैं भी सिगसमेंट के खिलाफ हूँ। तुम एक काम करो, मैं तुमको एक प्लांट देता हूँ पॉइजन वाला, वो ये नोबल मैन के चेस्ट में जाके रख दो। मैंने क्या किया भाई, मतलब मेरे पास दोनों ऑप्शन थे, या तो मैं इसको सही में इस मर्डरर को पकड़वा दूं, या तो उस नोबल मैन को पकड़वा दूं जिसने मर्डर नहीं किया है, बट वो है तो हरामी आदमी, इधर उधर आए दिन किसी ना किसी का तो कत्ल करता ही रहता है। तो भाई मैंने 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 क्या किया भाई, उसको फेक फेक सस्पेक्ट के चेस्ट में गया और उसके वहां पे प्लांट डाल दिया पॉइजन वाला। और अब जैसे ही कोर्ट वाली बात आई, मैंने भाई उसके खिलाफ सारा स्टेटमेंट दे दिया। वो गरिया दिया, उसने तलवार निकाली और सबने उसको मार दिया। उसके ऊपर फेक मर्डर का इल्जाम लग गया और इसीलिए वो यहाँ पे पड़ा हुआ है इस तरह। यहाँ भी धुरंधर तो हुआ है, यहाँ भी धुरंधर हुआ है। बेंचेस क्या क्वेस्ट थी भाई मेरे को भाई। मैं सच्चे मर्डरर को पकड़वा देता, लेकिन वो सच्चा मर्डरर जो है ना वो एक्चुअल में हमारी तरफ है। और वो ऐसा नहीं कि आए दिन किसी का भी मर्डर करता रहे। वो उसने सिगसमेंट कैंप के एक क्यूमन लीडर का मर्डर किया है। क्यूमन लीडर का मर्डर। क्यूमन्स कितने बुरे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई मैंने कहा ये बंदा एक तरह से अपनी तरफ है भाई, ये हमारी तरफ का है, तो इसको स्निच करने का क्या मतलब भाई, इसका साथ देते हैं और यहाँ के एक चूतिए नोबल को मार देते हैं जो कि भाई हमारे खिलाफ वाले किंग के अंडर सर्व करता है। उजैर बना दिया उसको, यस उजैर बलोच बना दिया भाई। उजैर बलोच वाला काम कर दिया भाई, सारा ब्लेम उस पे चला गया साला गेम बहुत खतरनाक चीज है भाई, मैं जरूर टॉयलेट करके आता। चलो आई एम बैक। अब कंटिन्यू करते हैं आगे का पार्ट, ठीक है। मान गए यार डेवलपर्स को यार। Already got his blood on, just grabs him by the horns, wrestles him to the ground, and then starts giving the death such a high. The fur is flying off. Wait, fellas. Stop.
अच्छे क्वेस्ट हैं वैसे विचर से। अरे भाई बहुत अच्छे हैं और डेप्थ ज़्यादा है, विचर से ज़्यादा ही डेप्थ है, हिस्टोरिकल डेप्थ भी है ना, और कैरेक्टर्स भी ज़्यादा हुआ है, एनपीसी के पर्सनैलिटी फील होती है। लेट्स गो। तो बेटा हमजा अली मजारी बाहर आ गया आपका मेरा। He's too much for me. And it's done. There. टॉप टियर भाई। There. It's done. What's the matter? Aren't you happy? It just doesn't seem right. What we did to those people. Not people, the enemy. Remember that. Trust me, you'll sleep a lot better. By the way, who's that fella over there? The one who fought on our side? He's called Crow. We met in the camp. I wouldn't say he's our ally, but he's against Sigismund. He killed the Cuman's commander and blew up the ammunition store. It's a long story. Yeah. Fucking hell, now that's a man. Hamza Ali I like Bazari. the sound of him a lot more than a lot who've settled into Devil's Den. Brabant has already brought up his promised reinforcements. What are they like? Well, you'll see for yourself. But now, we have to get out of here first. No, don't leave yet. There's something I have to take care of. Make it fast, though, before someone comes to see what all the noise was. Damn it, lads, get a move on. We'll never make it to Devil's Den today at this rate. I want to go to Devil's Den with you. Hop onto the wagon, then. You'll travel like a lord.
Like we poked a hornet's nest with that ambush, eh? We did. And that means the Devil's Den won't be safe much longer. Another reason not to stick around there and attack Malashov. Well, we're in luck. Ada's just returned from a scouting mission, and he says von Burkov's at the castle. And what about Brabant's men? You were saying you don't like the look of them. I just don't trust them somehow. But I'll admit that Frenchman surprised me. They're no greenhorns. We'll see how they fare in battle. Indeed we will. We'll soon get going. Get ready, and then we'll plan what's next. My God! The simple joys of life, eh, pal? How have you been getting on? Well, I finally got my shit together. A nice, big, solid one. Are you better? That's what I just said. Anyway, do you think I'd miss out on the chance to hack a chunk off Otto's arse? You're not the only one. After what he did to Samuel's people. I'm more pissed off about how he handed our arses to us at Rabos. He chased us off like rabbits, the fucker. How could von Burgov have found out about our meeting in Rabors? Could someone have betrayed us? I don't know. But there's no point in trying to figure it out. It wasn't any of the captured lords. And if any of their men talked, we'll never know now. Did Zizka tell you how he plans to attack Malashov? I think it's obvious. We have to lure von Bergau into a trap, then quietly grab him. Then what do we need that cannon for? In case our ruse doesn't go according to plan. And I'm itching to fire that fucking contraption. These toys that use gunpowder pretty much even the odds. But they cost as much as a virgin whore. Aye, if we'd had one of them fat beauties with us at Snoimo, that would have been something. Why did they want to hang you? I reckon my face bothered them. More likely they're pissed off I'm not a hypocritical fucker like they are. And that's a reason for execution? Unlike the hypocrites in the League of Lords, I'm not ashamed of what I am. I know they call you Dry Devil. Aye. They call me a lot of things, laddie. And that's what rankles the Lords, that I'm getting rich at their expense. And that's some fucking fat loot they stole from the king. So you're on the king's side? I'm on the side of whoever pays me, lad. And I'll tell you one thing. I've never gone back on my word. My noble word is my oath. Unlike that of bastards like von Bergau or von Rosenborg. Have you been at war? Aye. I fought in Moravia, and I'm still the hetman of the royal city of Znaim. You're just a yokel. So you hardly know what's been going on in the kingdom these last few years? You're an experienced warrior. So teach me something. Not a damn thing, lad. Not unless you pay me well. But first, bring me some good wine. All right. Here you go. Good lad. Now, what do you want to know? I want to see what you can do with a mace. Ha ha! Good choice. It's better than a sword when you're up close. All right then. I'll show you a few devilish tricks. Good boy. ये डांसिंग विद डेविल क्या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है क्या? ठीक है.
दिस इजंट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो मैं भी कर सकता हूँ. What do you want? I'd like to use your services. Certainly. I need my wounds treated. All right. Let's talk. Certainly. How's this? You'll have to... All right. You mutt. There. All cleaned and bandaged up, friend. I hope next time you'll want me to do more than just walk you back. Slowly. Nice and slow. Whoa, whoa. I'm sorry. Greetings, Henry. The tournament is approaching. Would you not be interested in helping us again? I would need to pay for the feast, but you know how it is. We are in a bad way with coin. I will make sure everyone knows who our benevolent donor is. Here, take this. That is more than I expected. Thank you. May the Lord repay your generosity. I'm sorry. Schönen Tag. Möge Gott mit dir sein.
No. What'll it be? I'm looking to have a gift made for a friend. I'd pay a good price. No problem. I'll have it for you shortly. I knew you would. It is in. I'd like to do... You must be... Hi! Had you found what you were looking for, sir? Word about the where... Is this in... More. You, sir. And come again. Okay. Well, Excuse me. Christ be praised, sir. Greetings! word about... Well... What would... That's not... You see? I was glad to be of help to you, good sir. Tools! And tools! Tools here! Greetings. Careful. Chains here, iron and steel. I hope you find me. Greetings! Nothing to your liking, sir? Good day to you.
Easy, good horse. You silly donkey. Nice meat. Worried about... You I'm glad you found what you were looking for. I say, cattle. Okay, I'm back. Anything you want to talk about? भाई मैंने वही किया, क्या बोलते हैं, मैंने उस पे आरोप लगा दिया मर्डर का दूसरे बंदे पे, एंड वो भाई वो तलवार चलाने लग गया और वो अल्टीमेटली मारा गया। बाकी फिर आगे स्टोरी चली भाई, ड्रैग डेविल वालों ने अटैक करा। अब डांसिंग विद द डेविल खुल गया है, तो मैं वो कंटिन्यू कर सकता हूँ। उसे भी करूँगा, लेकिन पहले सोचा था मेरे पास जो इन्वेंट्री में सामान वामान पड़ा है उसको थोड़ा बेच लूँ एंड पैसे वैसे ले लूँ और एक दो वेपन कुछ खरीद लूँ एक्स्ट्रा। This one's gonna need some more work. ये बताओ, डिड यू किल और स्पेयर द कमांडर? कहाँ? उसके बाद यार जितने भी लोगों को अटैक करने का ऑप्शन आया ना सबको मारा है। ऐसा कोई स्पेसिफिक ऐसे चॉइस तो नहीं आई कि भाई स्पेयर करो या किल करो वाला। मतलब जब वो एम्बुश हुआ ना हम लोग का जो प्लान वाला था, तो उसमें सारे ही मारे गए। बाकी हेनरी ने ये भी बताया जिशका को कि वो जो स्टीफन क्रो है वो हमारी साइड तो नहीं है बट सिगसमेंट के खिलाफ है एक वे में, ये बताया। ओके हाँ यार, मेरे को कोई वो वैसा ऑप्शन दिखाई नहीं भाई, कमांडर को मारने ना कोई हार मान रहा था, सब लड़ ही रहे थे लगातार। क्या होता अगर वो हार मान लेता, तो क्या होता अगर वो हार मान लेता और मैं उसे ना मार पाता? A large beer for me. वो सरेंडर ही करता है। ये मेरे में कोई सरेंडर वेंडर नहीं हुआ। मेरे में जब एम्बुश हुआ ना तो सब लड़ रहे थे बस नॉन स्टॉप। कोई भी ऐसा एनिमी मुझे नहीं दिखा जिसने अपना हाथ खड़ा किया हो। सारे के सारे नॉन स्टॉप बस लड़ रहे थे। यू कैन किल हिम और इग्नोर हिम। यार मेरे में कोई भी खैर नहीं किया, मतलब मेरे में जितने भी थे ना वहाँ पे गार्ड्स सोल्जर सारे के सारे लड़ ही रहे थे। मैं नॉर्मली सरेंडरिंग एनिमीज को छोड़ ही देता हूँ भाई, वरना मैंने ग्यूज को भी छोड़ा था ट्रॉस्की में, उसने बाद में मेरे को 4 क्वेस्ट दी। Why is it you look, you know, different? Me?
All of you in this country are strange. I've traveled the world over, but there were never एक people बात बताओ, so डिड यू गेट एन pale. अचीवमेंट रिसेंटली? नहीं, मैंने एक्चुअली अचीवमेंट वाला ऑफ करके रखा है, जो सेटिंग है, तो मुझे नहीं पता मिली है कि नहीं. Limited. Your medicine, क्या नाम है physics, अचीवमेंट का, जरा बताना. astronomy burned together with मैं rain. चेक कर In लूंगा यहीं पर short, फोन पे. you are barbarians. आई थिंक कर Though सकते हैं. kind-hearted barbarians. Tell me about your travels. About those big cities. You the people feared living there. Well, for example, people in my world are educated. Not like in yours. Education is the greatest wealth there is. So what would you like to learn, my friend? I'd like to be able to heal people like you do. And what's stopping you? Find some books and a master to guide you. That's all you need. And couldn't you be that master? I don't have the time or the patience for that, my friend. Now, pay attention. I'd like to learn a few. Fine, that's why I don't keep... Where did you learn? In many places. A real scholar. But I learned the most in Timbuktu. What's it like there? The foundation of education is to learn how to read and write. So that you can study the Quran. You can get this foundation in one of our mosques. कुरान बोला उसने, कुरान होता है. और शायद ये भी बोलते होंगे. I heard they built a third. If you want to continue your pursuit of knowledge after that, you would have to find a teacher and study. The Hydra's head. अच्छा, let me check कि मुझे मिली है कि नहीं. मैं देख लेता हूँ बस क्या क्या ट्रॉफीज हैं. नहीं होगी तो मतलब नहीं मिली. इस पे दिखाएगा भी कि नहीं. अंडर ये भाई ऐसी नाम की तो कोई ट्रॉफी नहीं दिखी मुझे. हाइड्रास हेड जो अभी आप लिखे हो. द टू died in the last. The first two died in the last quest. This is the achievement if all Sigismund commanders of the Sigismund camp. If all the commanders of Sigismund camp died. Of the first two died in the last quest. ये हाइड्रास हेड क्या है? ये मैं वो वीडियो देख लेता हूँ. Oh man, I didn't even notice कि ये बंदा जिंदा होता है. मैं जिश्का के पास सीधे चला गया था. On the last counter, death depends on if you kill or spare him from dry diabolium. भाई, actually ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद ना मैं गया नहीं देखने वो है कि नहीं. मुझे लगा सारे मर चुके हैं. So he is alive. नहीं मरा वो. शायद बाद में मिलेगा मुझे स्टोरी में कहीं.
Hold on. Be careful. Stop pestering, soldier. आई थिंक किसी और ने ही मार दिया होगा। मेरे को लगा शायद किसी और ने या तो मार दिया होगा। ठीक है, छोड़ो यार, मैं वो ट्रॉफी के लिए मैं इतना वो नहीं करने वाला। कोई ना, वैसे भी भाई वो खत्म हो चुका था पूरा भाई, उसका कोई आदमी था ही नहीं उसके साथ। He is as good as dead. खैर मेन जिनको मारना था उन्हें तो मार ही दिया ना। Nice and safe. यस, ट्रॉफी डजंट मैटर। हाँ मेरे लिए नहीं करती भाई वो मैटर, मेरे लिए तो नहीं करती। मैं बस पूछा था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, अब वैसे आपने अच्छा किया पूछ के। पता है क्या, अब अगली बार मैं थोड़ा अलर्ट रहूंगा इस चीज को लेकर। Guten Tag. Was? I have what you ordered. I'm excited. This is truly. My pleasure. मुझे कुछ दिखा नहीं। मैं पता है क्या किया, जब वो लोग सब मर गए ना तो मैं थोड़ा लूट वूट कर रहा था, और लूट करके मैं निकल गया। मुझे लगा चलो हो गया, लूट वूट कर लिया मैंने।
मैं बस लूट करके निकल गया उससे बात करने। मैंने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर ये जिंदा होगा। मुझे लगा सब मर चुके होंगे भाई अब तक। कोई दिख नहीं रहा था। दैट वाज काइंड अनएक्सपेक्टेड। भाई केसीडी ने जितना पॉलिटिकल वे में सोचने पर मजबूर किया है ना, और किसी गेम ने नहीं किया। अदर गेम्स आर ऑलवेज अबाउट गुड वर्सेस इविल फैंटेसी। इसमें थोड़ा कम है चीज। यहाँ का तुम्हें पॉलिटिकली सोचना पड़ता है। यहाँ भी गुड इविल है वैसे। अब मैं वो वाली क्वेस्ट करूंगा, डांसिंग विद द डेविल। एंड वो करने के बाद भाई मेरा नेक्स्ट मिशन आई थिंक नो पॉइंट ऑफ रिटर्न वाला है। फिर मैं रुक जाऊंगा। फिर मैं थोड़ा बचा हुआ मैप एक्सप्लोर मारूंगा, लाइक थोड़े रून्स वगैरह एक्सप्लोर करने का ट्राई करूंगा। तो जो केसरी टू पीक तो है भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेम एवर मेड।
How's trade? I've got the coin for you here. Thank you very much. Henry, come here. Did anyone show up with an order? Yes, indeed. Some fella stopped by, saying he needed a good blade forged. I'm on it. That's what I... Once you're done... I'd like to do... Do you accept? More. What you were looking for. Okay, let me. ओके चलो नाइस, ये भी बन गया। ये मैगडेलेना कोई देने का ऑप्शन आना चाहिए जब मैगडेलेना पूछे तो। अब भाई डांसिंग विद द डेविल करूंगा भाई मस्त जाके भाई साहब। All right, go. अब हाँ फिर रात होने वाली है यार गेम में फिर से। ना अभी शाम ही होने वाली है। बारिश का मौसम है ना। Excuse me. God be with you. God be with you. I brought you what you wanted made. Let's see it then. Just how I imagined it. Thank you. Glad to be of service. God be with you, sir. God be with you, man. Sorry.
अब मैं हेलो सैज भाई, वेलकम भाई। मैरिज हो गई, फिर बाद में जेल भी, गुड और पेबल का पर्क भी मिल गया और 20 करिश्मा लेकर घूम रहा हूँ और घूम रहा विद ग्यूज का आर्मर फुल्ली इक्विप्ड और एक कॉमन लॉन्ग शॉट सिल्वर लेवल का। अरे भाई साहब काफ़ी खेल लिया है, काफ़ी आगे आ गए। अच्छा तुमने ग्यूज के साथ क्या किया जब कैप्टन नार्ली के साथ उसका जो भी प्रोनाउंसिएशन है गए थे, तो ग्यूज के साथ क्या किया? उसको मारे कि छोड़ दिए? हैंस को बचा भी लिया और समीन के लोगों को पेल दिया सबको। भाई वो तो बहुत फनी मोमेंट था भाई, बहुत फन मोमेंट था वो भाई। शादी वाला मिशन अच्छा था भाई गेम का, क्योंकि मतलब यार डांस भी करने मिला, एनपीसी से बातें भी हुई, डाइस भी खेला, पीने को भी मिला। शादी वाला मिशन फन था, बट एंड कुछ ज्यादा ही अलग लेवल पे हुआ वो। ग्यूज वहाँ नहीं था, एटलीस्ट मुझे कहीं पर भी नहीं। ग्यूज जो है ना वो एक्चुअली अगर आप उसको जैसे जिंदा छोड़ दो ना, तो वो शादी वाले मिशन से पहले तक समीन में रहता है। समीन में वो आपको वो देता है, साइड मिशंस देता है बेसिकली। क्या बोलते हैं, बैंडिट्स पकड़ने के, एटलीस्ट मतलब 4 मिशंस देता है टोटल, एक एक करके, दो दो तीन तीन दिन के गैप पर इन गेम। तो वो इसलिए पूछ रहा था कि अगर मारा होगा तो फिर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मारा है तो मिल जाएगा। डांस प्लस सोने को प्लस ड्रिंक्स प्लस फाइट्स, मस्त भाई, बहुत ज्यादा भाई। अभी तो वो क्या होते हैं, जेल वेल में हो ना। हाँ 2 साइड मिशन के, फिर शादी में चला गया था। ओके ओके, देखना अगर 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 ये मिशन के बाद जब तुम्हें वापस मौका मिले ना समीन जाने का, तो उसके बाकी 2 कर लेना, ठीक है? बढ़िया है, क्योंकि पूरा पूरा कंप्लीट कर लेना। मेरा भी ये गेम काफी, मेरा तो होने ही वाला है गेम भाई। मतलब मैं एंड गेम के क्लोज हुए, एक बैटल के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बाकी जब मेरा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाएगा ना गेम, तब मैं और बचा हुआ एरिया एक्सप्लोर मारूंगा। और ये एक डीएलसी है, ये मैं गेम के बाद ही करूंगा, क्योंकि गेम के बाद के लिए करने के लिए रेकमेंडेड है भाई। ये वाला मैप बहुत बढ़िया है, कुटनबर्ग वाला। जेल से बाहर आकर समीन वाले सारे लोगों को मार दिया, इंक्लूडिंग नॉर्मल सिटीजन। अरे नहीं वो नहीं, मैं वो उसके बाद का कह रहा था, पीटने वीटने के बाद का जो कट सीन है उसमें। अभी वहां पे बची है चीजें। A stranger? What the fuck are you doing here? Is something wrong? I'd say so. Let me explain. Who have we here now? I know you. You fought at the tournament in Kuttenberg. Yes, I did. I bet money on you. You won me a fortune, fella. You bet on the right horse, then. Too damn right I did. Never dreamed I'd ever meet you, though. And I never expected anyone to recognize me. Ah, go on. Everybody must know you. Hey, I still have some of my winnings. Take it. I won't take no for an answer. Well, thanks. Have a beer on me. Gladly. So, are you planning to fight again? I'd come by to check it out. Make a bet, you know. I can't rule it out. Right, fine. You know, I have a job to get on with. I'd love to chat, but you understand. I'll get it. हाँ कुटनबर्ग जाना है। हाँ आएगा ऑप्शन जब तुम्हारा मेन स्टोरी में आगे बढ़ेगा। वो कब बढ़ेगा वो खुद ही देख लेना, अभी थोड़ा टाइम है तुम्हें जाने में, अभी तो स्टार्ट ही है, बट आएगा वो कुटनबर्ग वाला। God be with you. I'm with you. Damn, that was really him. बस तलवार निकालने की जरूरत नहीं थी, मैं अटैक कर देता। ये बंदा तलवार निकाला है, मेरे को लगा मारने के मूड में है ये। बड़ा बिना आर्मर के मेरे को मारता ना, बेवकूफ होता है एकदम। एक सेकंड यार, मेरे को वो चाहिए, मैं एक बैकअप वेपन और लेना चाहता हूँ। स्मीडी आर्मर के पास शायद एक होगा मेस, शायद देखता। भाई बाकी खेलते जाओ सर, बढ़िया है। अभी तो और तगड़े मोमेंट है।
एक बार तुम्हारा इन्वेंटरी दिखाना वेपन। हाँ रुको दिखाता अभी मैं। ये तो हॉर्स की इन्वेंटरी है। ये मेरी ये वाली स्वॉर्ड है रेडजिक, सर रेडजिक को बेला स्वॉर्ड। सर रेडजिक क्या है, KCD 1 तुमने जब खेलोगे ना तुम्हें पता चलेगा कौन है वो। वैसे तो अभी सेकंड गेम में भी है वो, लेकिन फर्स्ट गेम में उनका ज़्यादा बड़ा रोल है। ये कॉमन लॉन्ग स्वॉर्ड एक बैकअप के तौर पे रखी है मैंने। ये हंटिंग हुआ, और ये क्रॉसबो और ये सब चलाने के लिए, और ये डैगर वगैरह स्टेल्थ किल के लिए, और ये टॉर्च, और ये अपना सर पे पहनने के लिए। अभी वो बड़े काले भालू तक पहुंच गया हूँ, बेल ब्लैक में, थूकोंग में। अच्छा काफी आगे आ गए। ये कालू वो भालू कहाँ, कौन से मिशन में आता है, कौन से चैप्टर पे ऊपर याद बताना, मैं थोड़ा भूल गया हूँ। ये तो क्लोथिंग वगैरह है अंदर की। ये मैंने आर्मर वगैरह ये सब भी रखा है कि एक अगर खराब हो जाए तो मैं दूसरा पहन लूँ, बैटल में खराब हो जाता है। ये मेरा हाथ और ये पैर वाला, और ये नॉर्मल शूज है, और ये रिंग और स्पेक्स फॉर इंक्रीजिंग द कैरिज्मा, जब मुझे थोड़ा अच्छे कपड़े पहनने हो। फर्स्ट में ही होगा शायद अभी। अच्छा हाँ याद आया, फर्स्ट चैप्टर में ही था। ये तो खाने पीने की चीज़ें, ये सड़ गया, इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा। ये मेरा पोशंस वगैरह है। पोशंस मैं इसलिए रखता हूँ ना क्योंकि बहुत मिशंस आएंगे ऐसे जहाँ पोशंस, देखो पोशंस वैसे खुद का भी हेल्प करते हैं। जैसे ये बोमैन्स ग्रुप में पी लो तो वो आर्चरी में आसानी होती है। और बहुत पोशंस का क्या है कि किसी सिविलियन की हेल्प करने में काम आते हैं अगर उसको इंजरी हो तो उसके लिए मैंने रखे हैं। और ये बुक्स वगैरह, ये रीडिंग करके अपना वो अपनी रीडिंग स्किल्स बेटर होती है। मेरी स्किल लेवल थोड़ी लो है इस बुक के लिए। और ये तो अपना ट्रेजर मैप्स हो गए, और ये वो है स्केचेस हैं, क्या बोलते हैं, वेपन बनाने के लिए। और ये वो है क्या बोलते हैं, एल्कमी के लिए सामान है, एल्कमी के लिए प्लांट्स वगैरह लगते हैं। और ये ब्लैक स्मिथिंग के लिए अपना। और ये सब तो फालतू ही है, ये सब ज़्यादातर। स्पेड काम का है, बाकी कीज वगैरह फालतू ही है। भाई आपने फाइट क्लब देखी है? यस देखिए मैंने। ये वाईटी वालों ने लाइव चैट पे साइज बड़ा किया है ना। हाँ करा है 2-3 दिन पहले ही करा है। ये बैंडेज है, बाकी बैंडेज क्योंकि इंजरी हो जाए तो उसके लिए। और ये किट्स वगैरह मैंने रखी हैं, ब्लैक स्मिथ किट, ताकि मैं बिना दुकानदार के खुद ही रिपेयर कर सकूं। और ये परफ्यूम वगैरह क्या बोलते हैं, थोड़ा वही स्मेल बेटर कराते हैं। और ये डाइस के लिए मैंने रखा है, और ये बैजेस है। यही सब है मेरे पास। और ये हॉर्स में बाकी एक्स्ट्रा सामान है हॉर्स के लिए जो रखा है मैंने। ये हॉर्स के लिए, और कुछ मेरा एक्स्ट्रा है एज अ बैकअप। कैसी रही फाइट? मेरे को तो बढ़िया मूवी लगी भाई। बट सीन ये है ना, मैंने स्पॉइलर ले लिया था उस मूवी का, मतलब मेन प्लॉट ट्विस्ट मैंने ऑलरेडी स्पॉइल कर लिया था अपना। बस वो मैंने गलत किया। बाकी मूवी बड़ी अच्छी थी भाई, बहुत मस्त गेम है। और रिजाइन दे दिया भाई। यस सुना मैंने भाई, धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन फाइनली दे दिया। आज के दिन याद रखा जाएगा। फाइनली प्रोटेस्ट काम आई। अब ये तो पहला स्टेप है भाई, ऐसी चीज़ें बेटर करनी है। इट्स अ ग्रेट मूवी, बट आई थिंक थोड़ी ज़्यादा ही ग्लेज्ड है यार। पता है मेरे को लगता है ये मूवी ग्लेज्ड इसलिए भी है ना, क्योंकि वो मूवी ना बहुत लोगों को बहुत चीज़ें सच भी बताती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब खुद को बहुत स्पेशल समझते हैं, या वैसा समझते ना, आई एम द चूजन वन टाइप एटीट्यूड। आई थिंक उसके इसलिए वो मूवी काफ़ी ग्लेज्ड है कि वो काफ़ी रियलिटी बताती है इस मामले में। लोग कई बार लोग कई चीज़ इसलिए करते हैं ताकि दूसरों को खुश कर सके, या जस्ट बिकॉज हर कोई कर रहा है। और स्पाइडरमैन की कल बुक टिकट करूंगा, या सेकंड डे है लिया। मैं भी भाई कोशिश करूंगा कि फर्स्ट सेकंड डे पे जाऊं। ऑडेसी में मैं सोच रहा था, लेकिन यार ऑडेसी मेरा नहीं प्लान बन पाया यार। मतलब एक महीने में 2 मूवीज़ देखना थोड़ा मुश्किल काम है। और मेरे को अगर सिर्फ एक चूज़ करना हो तो आई वुड चूज़ स्पाइडरमैन, क्योंकि मैं स्पाइडरमैन ज़्यादा पसंद करता। मैं नोलन की मूवीज़ का इतना मैं फ़ैन हूँ नहीं, इतनी देखी भी नहीं है मैंने ज़्यादातर वैसे भी। आज के दिन ये पूरा प्रोटेस्ट बहुत रिमेम्बरेबल वो होगा। यस आराम से। जो ये तो मैं तुम्हें दिखा दिया। मैं तो ड्रॉप मार रहा हूँ ये सब में। ग्रोशन रहेगा भाई वो मेरे काम, ग्रोशन और लॉकपिक। और
पेड़िया रखूंगा कोई ये सब काम का है। देखो चाबियों का गुच्छा है पूरा। मैंने कल ओडेसी देखा, बहुत मस्त थी भाई। अरे भाई तुमने देख ली? नाइस। मत तुम्हें मतलब तुमने नोलन की अगर ज्यादातर मूवीज देखी तो उस हिसाब से कैसी लगी? ओडेसी के लिए यार मैं थोड़ा एक्साइटेड ही कम था भाई, मतलब नोलन की है, बट ये मैंने नोलन की ज्यादातर मूवीज देखी नहीं है, इसलिए मेरा उतना बना नहीं वो प्लान। और मेरे को लगा मैं घर वालों को ना अगर बोलूंगा 1 महीने में ही 2 मूवीज के लिए तो मना कर देंगे मेरा, इसलिए मेरा था कि मैं स्पाइडरमैन ही देख लेता। मेरा बहुत मन किया तो मैं बाद में देख लूंगा, स्पाइडरमैन के बाद ही ओडेसी देख लूंगा, बट स्पाइडरमैन मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगा। पहले के पास शील्ड ही है। मुझे तो स्टार्टिंग में 15-20 मिनट में ही आइडिया आ गया था प्लॉट ट्विस्ट का, बिकॉज स्टार्टिंग में देयर वर हिंट्स ऑफ एमसी बीइंग डिल्यूजन, मेन कैरेक्टर बीइंग डिल्यूजन 1 सेकंड के लिए टायलर को दिखाया था भाई। वो तो चीज़, उसके बाद मैंने एक चीज़ और देखी, वो उसमें भी ऐसा ही ट्विस्ट आता है, बट मैं बताऊंगा नहीं कौन सा, वरना स्पॉइलर हो जाएगा। हाँ सारी देखी है, ये वाला तो काफ़ी सिंपल है बट डैम टू गुड, मज़ा आ गया। ओके, मैंने सिर्फ डार्क नाइट ट्रायलॉजी देखी और वो देखी है क्या बोलते हैं इंटरस्टेलर, बाकी मैंने नोलन की मूवीज नहीं देखी ज़्यादा, कभी कभी आराम से देखूंगा सारी। और ऐसी का बस यही है ना कि मूवी थोड़ा ऐसे टाइम पे आ रही है ना, मतलब मेरे को लगता है कि वो गलत टाइम पे रिलीज हुई है। बस अगर थोड़ा वो ऐसे टाइम पर आती ना, अगर कोई और मूवी नहीं है आसपास, तब मैं देख लेता थिएटर में। वो स्पाइडरमैन के बीच एकदम आ रही है भाई, तो भाई एक महीने में 2 मूवीज देखना थोड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब पैसे की दिक्कत है, बट घर वाले ना अलाउ नहीं करेंगे, फिर वो वाला दिमाग में वो चीज़ आती, वरना मैं कर लेता भाई दोनों। मुझे तो बता ही दो, मैंने देख रखी है। अरे मैं एक टीवी शो की बात कर रहा हूँ, टीवी शो में थोड़ा वैसा सिमिलर प्लॉट ट्विस्ट है, बट मैं उस शो का नाम नहीं लेना चाहता। उसका ना नाम ले लिया तुम समझ जाओगे कौन सा शो है। और वो शो भाई उस प्लॉट ट्विस्ट से भी बढ़ के है, वो प्लॉट ट्विस्ट तो मतलब एकदम पहले सीजन में ही आ जाता है, बट शो उसके आगे भी लंबा चलता है। शायद चैट में एक और बंदा है बस, तो शायद उसने भी देख, बस फाइट क्लब सबने ही देख ली होगी। और मैं जिस शो की बात कर रहा ना, वो शो का वो प्लॉट ट्विस्ट वो खुद ही फाइट क्लब से ही इंस्पायर था। Good evening, Henry. Good evening, Catherine. Have fun, whatever you're planning. Are you coming with us to Malashov? And what would I do there? What's wrong? Are you upset? गॉडफादर, यस 1 और 2 देखी है मैंने, पहली 2 मूवीज बस देखी, थर्ड नहीं देखी। थर्ड मैं बाद में ही देखूंगा, थर्ड मैंने सुना उतनी अच्छी नहीं है, मतलब पहली 2 मूवीज ज़्यादा अच्छी हैं, पहली 2 तो मैंने देख रखी है। मुझे क्राइम ड्रामा मेरा फेवरेट जॉनर है, क्राइम ड्रामा मेरा वन ऑफ द फेवरेट जॉनर है भाई, टेलीविजन और मूवीज में। और भी देखूंगा मैं, मुझे देखनी है वो। अरे देखो भाई, बिल्कुल देखो, गॉडफादर 1 पहले 1 देखना, फिर 2 देखना। उसके अलावा भाई मेरे को गुड फेलास भी देखनी है, मेरे को हीट भी देखनी है, ये दोनों भी मेरी लिस्ट में ये देखने को। पैरासाइट नहीं देखी मैंने। एंड वो गॉडफादर का एक्टर है ना, वो क्या होते हैं एल पचिनो, उसकी एक और मूवी है स्कारफेस, वो भी मेरे को देखनी है भाई। गॉडफादर वगैरह का ना जो इन्फ्लुएंस है काफ़ी बड़ा रहा है भाई, मतलब टेलीविज़न हिस्ट्री में भी, टेलीविज़न सीरीज़ में भी रहा है, जैसे क्या बोलते हैं सोप्रानोस वगैरह उसी से इंस्पायर था, और सोप्रानोस के बाद फिर सोप्रानोस से इंस्पिरेशन ब्रेकिंग बैड ने ली है, तो मतलब उसका उन सब में इंस्पिरेशन रही है। मतलब गॉडफादर का इन्फ्लुएंस मैं कहूँगा ना, जो क्रिमिनल बेस्ड चीज़ें देखते हो ना, जैसे क्राइम रिलेटेड गेम्स, GTA टाइप, या ये क्या बोलते हैं अपना माफिया, ये सब काफ़ी मैं कहूँगा गॉडफादर की वजह से इनका एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं आया है। मैंने तो ये देखा था GTA गेम्स के ज़्यादातर वॉइस एक्टर जो है ना, वो गॉडफादर या सोप्रानोज वाले एक्टर्स हैं, सोप्रानोज वाले ज़्यादातर है, और सोप्रानोज खुद गॉडफादर से इंस्पायर है, तो मतलब गॉडफादर ने काफ़ी इंस्पिरेशन दी इन चीज़ों को एक वे में। वैसे ये मूवी 50 साल से ज़्यादा पुरानी है,
supposed to be happy? Ah, for Christ's sake, you're all the same. द गॉडफादर क्लासिक दिन बहुत ज्यादा भाई। इवन भाई जो GTA 6 की पता है, GTA 6 की तुमने वो देखी जो स्क्रीनशॉट्स है ना, उसमें लूसिया का एक क्या बोलते हैं आउटफिट था ना, वो एक्चुअल में स्कारप्लेस वाली किसी लड़की का आउटफिट था। मतलब वो तो वहाँ स्कारफेस आ गया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये पुराने टाइम की मूवीज जो है ना, इन्होंने इंस्पिरेशन दी है क्रिमिनल जॉनरा वाली चीजों को, तो समझ रहे हो ना? Why do I even bother trying? You'll all just end up getting killed. If you're talking about that plan, well... Jan still thinks it'll be easy to capture von Berghoff. But I heard what Ada said. What did he say? That Otto von Berghoff has that fortress full of fresh mercenaries, armed to the teeth. My God! I should have slit his throat that time I had the chance at Trotsky. We must defeat and capture von Berghoff. Aye, there's always some we must with you fellas. Look, if we succeed, we'll free our king. Who gives a damn about some king? मुझे क्यों देखना है आपको? क्या हुआ? किसमें? समझा नहीं मैं, मिस्टर पैरासाइट। Everyone. He'll drive Sigismund away and end the war. Ha! You lot and your big plans. What's the matter? You didn't mind what we were doing until now. And all of a sudden... Until now we chose our foe. One we stood a chance against. And engaged them when we had an edge. And for some time now we've been getting into wilder and wilder enterprises. पैरासाइट मूवी का नेम है भाई, मुझे क्यों देखना है? अरे यार यार मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा इसके चैट का। पैरासाइट मूवी है। But go, if you must, and try not to die there. मेरे पास प्लॉट आर्मर है, no worries. In the meantime, I'll wait at the fortress in Sukdal. That's where we'll meet. How are things looking at Malashov? How is Malashov? Właśnie stamtąd wróciłem. Jedno wiem na pewno. Ten Last time I checked KCD2 में 168 hours थे मेरे। zamek ma kurwa słuszne obwarowania. Could you slow down? अभी तो और लंबा खींचूंगा। I'm trying to understand. मेन स्टोरी तो हो ही जाएगी, अब ज्यादा नहीं चलने वाली वो। Co ci chodzi? This is going. सभी कर चुका हूँ मैं, साइड कंटेंट आई थिंक हर सारा हो चुका है गेम का। आई एम नॉट फाइंडिंग एनी न्यू कंटेंट नाउ। बस भाई वो रूइन मैप पे वो है ना, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टाइप के, ये बस ये सब जितने भी है ना, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से पहले इन सबको भी कर डालूंगा मैं। देख लूंगा कुछ अगर नया मिल जाए तो बाय चांस। ट्रेजर तो मैं नॉट इंटरेस्टेड, मैं मेरा पैसे की कमी नहीं है। ट्रेजर हंटिंग मुझे इंटरेस्ट नहीं देती पर्सनली। और जैसे ही मेरा मेन गेम कंप्लीट, उसके बाद मैं ये DLC स्टार्ट करूंगा मिस्टीरिया वाला, क्योंकि मेन स्टोरी के बाद करने के लिए बना है। उस डायलॉग्स उसके वैसे ही है, सुना मैंने। वाई ओनली 168 इतनी सारी स्ट्रीम्स के बाद भी भाई। तो डिफरेंस है ना, मैंने वैभव भाई की स्ट्रीम्स वो 10-12 घंटे की स्ट्रीम करते हैं हमेशा, इसलिए उनकी कम स्ट्रीम में भी ज़्यादा आवर्स है। मेरी जहाँ से तुम स्ट्रीम देखो तो 3-4 घंटे की, और 1-2 स्ट्रीम्स तो बस 1-2 घंटे की ही है। बंद हो जाता था कई बार नेट मेरा तो, या मेरा लाइट चली गई थी पूरे सारा इन्वर्टर के साथ, तो बंद हो गया, तो वो स्ट्रीम मतलब एक्स्ट्रा आ गई। मान के चलो मेरा कम से कम 5-6 स्ट्रीम्स कम होनी चाहिए थी उस हिसाब से। 1 आवर डिफरेंट, वही तो कह रहा हूँ, मेन डिपेंड करता है मेरा आवर कम है एक्चुअल में। अब तो मैं इन गेम दिखाता हूँ मेरे कितने आवर हैं, जो यहाँ पर ये रहता है स्टैटिस्टिक्स में। देखो यहाँ पर है टाइम प्लेड इन प्ले टाइम 137.5 है, 137.5 आवर्स है मेरा टाइम प्लेड इन प्ले टाइम। एक्चुअल प्ले टाइम यही है मेरा। आई नो जोक था विच वेंट ओवर हिम। ओह यस, बस भी आवर्स काउंट नहीं करता यार, आवर्स वगैरह डिपेंड करता है, मतलब तुम कितना बहुत पता है क्या, बहुत बार आवर्स तो इस चीज़ में ही बढ़ जाता है ना कि तुम गेम कई बार पॉज करके बस बैठे हुए, उसके भी आवर काउंट होते हैं। वो तो आवर मेन रियल आवर यही है भाई जो इसमें देख रहे हो। Excuse me.
I'd like to learn a new... You might. I'd like to learn... Why not? And since it's... I've seen you fight, and you could be a bit more direct. अभी तो मैं Forza Horizon 5 and Life is Strange खेल रहा हूँ. कैसा लग रहा? I'll show you how to take out your opponent without slitting him open from his neck to his arse. What do you say? That sounds good. Teach me that. Aye, I can see you like long swords too, eh? So listen, the trick is about speed and surprise. After stabbing with the sword, you immediately turn it around, and while sliding, you strike the sword's pommel forward. If you do it fast enough, the opponent won't have time to move, and you'll hit him right between the eyes. And now, come and try it a few times. Well, good, eh? Let it sit. You're for in a while. hurry, eh? Get it in your blood. You'll see. I'd like to... You mad? I'd like to... Not now. Life is Strange is amazing when I'm playing it at perfect time of my life. Right now I guess it just feels so good to talk with the characters, look at the world around. अरे भाई, nice. सही है भाई, enjoy. What do you know about the attack on Malashov? You're asking the wrong fella, Henry. Do you think we stand a chance of taking von Berghoff? Well, if anyone can do it, it's Zizka and the devil. Although I'm not saying it'll be easy. Or that I approve. How's that? God doesn't lead us by the hand. We have to find our own path to him. Or at least try to. And I'm not sure just how much divine mercy that pair deserve. Ah, Sir No Sabbath. My respects. I assume you won't be joining our offense. Right? Under other circumstances, I would avoid battle. You're right, but this is personal. Otto von Berghoff is responsible. Forza Horizon 5 के बारे में तो क्या ही बोलना है. I'm addicted to that shit. Played hours कल के पहले. अरे भाई 8 hours. For that slaughter ज़्यादा ही मजा आ रहा है. It was he who advised Sigismund to attack my people. So you want revenge? They plundered the synagogue, murdered dozens of people. That Mamsa must pay. I will play with him like a cat with a mouse. He will beg for mercy, for a quick death. I understand how you feel. Once I get my hands on Markvart, there's no telling what I'll do. I'm going to kill von Berghoff, even if Shiska is against it. Fuck him. It was I who got the money for everything. So no one is going to tell me what I can and cannot do. What about you? Why are you willing to fight? Otto von Berghoff deserves punishment for everything he's done. So we see eye to eye on him. Aye. Von Berghoff is nothing more than a swine, brother. And if there's anyone that can get him, then it's Zizka and the devil. That's why I'm going with them to Malashov. भाई क्या ही बताऊं, अभी मैं बस दिन भर घर पर हूँ एंड आई हैव नथिंग टू डू. सारी एग्ज़ाम हो गई. कैप राउंड्स के लिए वेट कर रहा हूँ. सवेरे उठ रहा हूँ, गेम खेलता हूँ रात में सोने तक पहले. अरे खाली टाइम है. मैं कहूँगा भाई बाहर जाके मूवी वगैरह देख लो कोई तगड़ी. ऑडेसी लगी हुई है वही देख लो. ऑडेसी देख लो, स्पाइडरमैन आ रही वो भी देख लेना. अभी करूँगा इससे बाद. पहले मैं ड्राई डेविल से सारी प्रैक्टिस करूँगा.
Why is it so important to capture Otto? अब आपको क्या बताऊं मैं कैसे टाउन में रहता हूं, यहाँ पर सब मूवीज नहीं लगती भाई। अब तो कितनी दूरी है? Isn't it obvious? Pray enlighten me. Look, Otto von Berghoff is the supreme दोस्त chamberlain भी बाहर in गए this हुए land. हैं घूमने। He's in charge of all the royal towns and monasteries, meaning ये कितना दूर है he यहाँ is से आपका worth थिएटर his जहाँ पर weight लगती है मूवी? in silver. So, it's ransom we're after? Not quite. Von Berghoff is one of the leaders of the League of Lords against the king. If we want the lords to free our king, we have to force them to do it. And capturing von Berghoff would be the best way to do that. And to think, until recently, you मेरे घर से एक और दूर है नागपुर, वहाँ लग। अच्छा। give a damn about politics. How does Zizka want to attack Malashov? He didn't tell me much, but I got the impression it'll be a bit different compared to the usual tactics. A major operation. Such secrecy. It almost seems like he doesn't trust us. True. Zizka's being damn tight-lipped. But I don't blame the man. After Rabosh, Sigismund had a lot of our people arrested. And I'm sure a lot more are frightened. 1 hour Any just of to them reach could there in a betray us. different city. You think there could be a spy amongst us? Doubtful. All of us here would gladly stab Sigismund in the gut. Well, that traitor von Berghoff. Brabant and I still owe him quite a bit of payback. I can't wait to see the look on his face when we take him captive. What do you think about the Dry Devil? Hinek? I think he's a right bastard. But I'd rather fight with him than against him. So why does Zizka trust him so much? Hinek is Yob's ally, and Sigismund is their common enemy. Christ. Priesen sei der Herr. Excuse me, but I'd like to ask you how many men you have with you, sir. Meine Truppe ist nicht groß, but for your purposes, I think it will suffice. Außer den Leuten here in the camp, I also have Soldaten nearby, and if need be, they will go with us. Doch wir werden abwarten, according to what Hauptmann Schischka says. And what did you agree with Goodman Brabant? How much did he promise you? Enough to risk meinen Hals, my neck, for you. Half of the reward in coin, in advance, and half in booty on the spot. You pay for any losses of the horses and archers. If your plan fails, you shall pay us the rest of the money we would otherwise get. So you already know what the plan is? All I know is you want to capture some small fortress. You get inside, we take care of the rest. Kein Stürmen der Mauern und no sieges. Just a quick, clean job for my men. What weapons do you have? What can we rely upon in combat? Meine Truppe has the power of eine Lanze, and my people are experienced archers. We know how to take care of ourselves. And how many of you are there? Here in the camp, I have my Armiger Hagen Trott, 2 free archers and a combat hostler. Alles Gute und unerschütterliche Jungs. What experience do your men have? Where have they fought before? Das ganze letzte Jahr, we fought in Italy for Sir Musio Sforza, and we wintered near Milan. Who were you fighting against? And did you win? Unfortunately, this time, Il Capitano Barbiano was luckier and beat our Musio in battle. But it was not a bad year. Italien ist ein großartiges Land. I think we shall head south again in the autumn. I'm certain Milan will soon rise against Florence, and there'll be a new war. Möge Gott mit dir sein. Grüß dich. Guten Tag. My name's Henry, and I'm a friend of Zizka's. I came here to see who Brabant brought us. Ja, ich weiß, wer du bist. Brabant spoke to my lord, Sir Urso, about you. He said you want to do something big. Worum geht es denn? Well, unfortunately, I can't tell you many details. I don't even know them myself. Zizka is being awfully secretive about it. Macht nichts. Das ist egal. A war is meant to be fought, especially if you pay us well. Fürs Geld oder für die Freude? What weapons do you have? And how many of you are there? Entschuldigung, mein Freund.
But you'd better talk about that with die ganze Truppe, including the horses, belong to Sir Urso. All right. Ganz wie du willst. And if you want to play some dice with me, mein Freund. I'd like to learn... Mine. If you're alright, but it can only be done with a sword. And what's more, you can't have a shield in your other hand. That sounds good. Teach me that. Of course. I knew immediately that would... The main thing is to attack from above. To quickly catch the opponent's wrist and push the edge of your own sword over his blade, so it's under his neck. If you do it right, I reckon I don't have to tell you what comes next, do I? And now, come and try it a few times. Good. I'd like to... Where's that? Again? Oh! Fine. Aren't those guys sad that you're just letting them sit there? I need help with that. Try to learn Polish. It's not so hard. I didn't need Polish to save your arses. Yeah, leave it now. Hej, komar, podejdź tu. Henry chce się do ciebie coś zapytać. I've got the feeling you're just stringing us along with that Polish. Ah, come on. You know other understand you pretty good. O co chodzi? Jasne, że rozumiem. No, ale on tobie nie, chłopie. To niech się ta pierdoła nauczy. What did you see at Malashow Fortress? To nie twierdza, ale zamek. Zaprawdę nie wiem, jak Ziszka chce go zdobyć. That castle strong like rock. Aye. It seems that Ruthard spared no expense. Rutard? Widziałem Rutarda. To si nie mógł widzieć. Siedzi w celi w Kutnej Horze. Who did he see? No to nie wiem. Ale zadek ma całkiem. You are cockot. What, then? Look like not only von Bergov is in fortress. Daughter of Kunzelin is too. What, Rosa? सही में? Seriously? Damn it. If anything happens to her, I'll never forgive myself. Right. The woman's is always trouble with them. Nawet nie. Rosa's a lady. And a very clever one. You like her, eh? You wait. Take it easy. No worry. Nothing happened to her. We save her. You see. What did you see in the village? Coś widziałeś? Do diaska, nie jestem głupi, pojmuję. Jest tam taka przyjemniutka karczma. No i piękne dziewki. Laziemne. Jedna... tam miała takie okrąglutkie jabłuszka, że mogłem się z nimi... ściśle okrągło. So, how many guards are there? I think you don't find out much from the other bald dead. He not keep his little gherkin in halls. Shame there is no hops growing. Servus. Guten Tag. मैं ये वाला मिशन करके जाऊंगा, डांसिंग विद द डेविल वाला, अनलेस बहुत लंबा चल गया तो। अगर बहुत लंबा नहीं चला तो बात अलग है, अगर बहुत लंबा खिंच गया तो मैं कल ही करूंगा, बट अभी स्टार्ट तो करूंगा आज मैं।
Pardon me. Does it hurt? Good morning to you. Longer as handsome as I used to be. Don't you find me revolting? Greetings. You want to show off how tough you look now? What about your mercenaries? Are they good? Ne t'inquiète pas, mon ami. Le Seigneur Morgenstern can always be relied upon. Who is this Morgenstern? C'est un bon ami à moi. We met years ago au Grand Tournoi de Lorraine, at the estate of the Duke there. Can he be trusted? Le Chevalier Morgenstern is not only a warrior, but also a serious patron of the heart. A man of renown. How did you find Morgenstern? Pendant que vous étiez chez les Hongrois, I went to Kettenberg. Le Chevalier Morgenstern was with Sigismund. But he turned him down because, le roi n'a pas d'argent. The king has run out of coin. So he's just an ordinary mercenary? Not ordinary. He's a renowned condottiere. Where does this Morgenstern come from? From Brunswick. His ancestor fought for Emperor Charles. A good house, mon ami. So why is he earning a living as a mercenary? C'est une triste histoire. He lost considerable estates due to his relatives and battles in Eastern Prussia. So he became impoverished? In truth, it was more his passion for art that led him to ruin. I'd like to learn... It will acquire it, especially what would you like? As an... I would only... Allons-y, mon ami. Welcome, sir. What can I do for you? I'd like to learn something. What do you want to know? I need some tips on... Fine. ये गोट स्किन को मैं जानता हूँ. I'd like to... What I... I heard... Fine. यार अब मैं जा रहा हूँ जैनजिस्का के पास. I've known you for a long time. Glad to see and you, I know Sam. when something's eating you, so spit it out. I was thinking everything over. What awaits us at Malashov? A short but nonetheless dangerous battle, in the best case scenario. And in the worst? Things go to fucking hell, and our worldly cares will be over. So prepare well. This really won't be easy. I'm ready. For anything. Good. The task won't wait. In the evening, I'll assemble the men, and then we'll talk about what's next. I'll wait with you. How about we knock back a few cold ones in the meantime? I'm not drinking today. I want to have a clear head. But once we have von Berghoff locked up...
अभी डूम्सडे ट्रेलर का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखा, थोड़ी एक्साइटमेंट फील हो रही। ऐसा क्या क्या एक्सप्लेनेशन था, मतलब कि लगा एक्साइटमेंट वाला? ओडेसी यार देखता हूँ मैं, शायद ट्राई करूँ देखने का। पता है मैं ओडेसी एक रीजन और था क्यों नहीं देखने गया, ये प्रोटेस्ट की वजह से ना मेरा तो फोकस अभी यहाँ था इस मुद्दे पर। मतलब वहाँ सीरियस बात चल रही है, मेरा फिर वो मूड नहीं बन पा रहा था कि एकदम से कोई मूवी देखने जाऊँ। So I say him, what do you expect when you drink like fish? Fish are not able to walk either. And then he threw you out? No, he cannot, because... Ah, vous êtes là. What is happening? बहुत थ्योरीज हैं, लीक्स भी हैं, पर न्यूजीलैंड के साथ देखो तो और बेटर एक्सपीरियंस होगा। हाँ वो तो है, रॉ एक्सपीरियंस बेस्ट है। Enough of the chit-chat. I want to know if we're going to get to work, Zizka. We shall. No reason to wait. Von Berghoff won't stay in Malashov forever. So tonight? Before dawn. Even the dogs will still be snoring. And we'll have plenty of time to move. I can't wait. Sorry to disappoint you, Hinnock. I need you in the village. Oh, fuck. I was looking forward to that, Cannon. Luckily, we have Crow for that. He says he knows how to use cannon. So the only question now is, who's going to help him with the bloody thing? I believe I might be of assistance, mes amis. You've already helped quite enough, Frenchman. The Duc de Bourgogne, once, showed off such a bête lourde in Champmol. And I was there. Is that so, Baron? Do you know how to handle it? Oui. If I have a few strong men to assist me. All right. Kubianka will go with you. If anything fucks up, we're counting on you to save our asses. The rest of us will lure the fortress garrison out, so we can cut them off. के लिए बहुत excited है। हाँ उसके लिए तो मुझे भी है भाई। Me and my men will cut the village off from the fortress. The second group will enter the village from the other side and cause mayhem. That'll be your job. Set fire to a haystack, make a racket. In short, anything that will lure the fortress garrison out into the open. You get me, Devil? Oh, aye. A good old blood orgy. As soon as they stick their noses out, the trap falls. And the rest will go like this. Listen up. Malashov is only a handful of... पिछली बार ऐसा एक्साइटमेंट डेडपूल वुल्वरीन के लिए था, वो ना उसके लिए मैं उतना तो नहीं था। आई मीन थोड़ा बहुत ठीक ही, मतलब फन थी मूवी, बट उतनी भी खास नहीं। लास्ट टाइम ऐसा एक्साइटमेंट मुझे नो वे होम के लिए ही था। नो वे होम के बाद नहीं हुआ कभी इतना। मैं आया जरा। मैं तो मस्त कजन्स के साथ गया था, थिएटर एक्सपीरियंस भी बढ़िया था। सब कैमियो पे हूटिंग हुई और वो स्टार्ट में डांस वाली फाइट हुई मस्ती 3D में। अरे भाई वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था भाई नो वे होम। मूवी वाले ही ठीक ठाक है, वन टाइम वॉच ही, लेकिन वो फन थी। Fuck. Looks more like a small castle. Aye, it's well fortified. It's got a moat,
2 gates and a big tower. That's where von Berghoff will be. And don't forget the drawbridge and the secret passage. Korytarz był zamknięty, byłem tam. Aye, it's to be expected they'll seal और वो off the डेडपुल passageway, वुल्वरीन, so we अरे have वो to get डेडपुल inside वुल्वरीन over का the बोल रहा bridge हूँ। and through. जो मेरे को लगा नो, तुमने कैमियो बोला ना, तो मुझे लगा नो वे होम की बात कर रहे। डांस तो ठीक था, वो अच्छा था वुल्वरीन डेडपुल का, वो तो बढ़िया था। बट कई लोगों को क्रिंज भी लगता है, बहुतों को फन भी लगता है। मेरे को ठीक लगा, मेरे को मजा आया। The gate. You and Capon will deal with that, Henry. You two know it better from inside. Then you'll let us in. Damn. That'll be as hairy as the balls of St. Killian. Aye, it won't be easy. But this isn't the first time for us. And besides, this time we've got artillery to back us up. भाई कसम से लास्ट ईयर मैंने बहुत झाटू मूवीज देखी थिएटर में। सिर्फ एक ही मूवी मैंने अच्छी देखी थी, वो थी मिशन इम्पॉसिबल और धुरंधर। ये दोनों ही अच्छी मूवीज देखी थी मैंने। बाकी भाई एक दो मूवी तो मैं बस जबरदस्ती देखने गया था भाई। झाटू मूवीज में देखने गया था, पर पता नहीं क्यों, क्या सोच के देखने गया था। मैं फोमो में देखने गया था, दिमाग कैसे काम कर रहा था मुझे नहीं पता। वो जॉन विक का स्पिन ऑफ वो झाटू मूवी थी, बहुत बहुत बोरिंग मूवी है, मतलब कुछ खास एक्शन नहीं है उसमें। और वो फैंटास्टिक फोर भी लर्न सी मूवी है भाई। दोनों का एक थिएटर एक्सपीरियंस बेकार था भाई। धुरंधर वगैरह ने भाई थोड़ा इंटरेस्ट जगा दिया थिएटर में भाई। अब मैं तब से मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं भाई से वही मूवीज देखूंगा जो अच्छी है। अब हर मूवी में नहीं मुंह मारना। लास्ट ईयर जो था ना 2025, मेरी लाइफ का ना एक बुरा फेज भी था वो भाई। वूचैंग खेल कर तो मैंने मादर चौधी करी थी, मैं बहुत बड़ा पापी था वूचैंग खेलते खेलते। दूसरा चुतियापा ये था ना, मेरे अंदर फोमो बहुत हो रहा था मुझे उस टाइम। मतलब जो गेम आ रही है बस मेरा मन करता था ये खेल लूँ वो खेल लूँ, फोमो बहुत होता था मुझे। आज के तारीख देखो, मैं ओडेसी जैसी मूवी को थिएटर में ना देखो तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस टाइम मैं झाटू गेम ना खेलने पर मुझे फ़र्क पड़ जाता था। मतलब समय चेंज हुआ ना, अच्छा लगा कि मैं अब पहले जैसे चूतिया नहीं। इंग्लिश में जोक्स भी बढ़िया थे, जो रेफरेंस मार्वल के जो गालियाँ दी थी। स्पाइडरमैन नो वे होम बहुत सही थी, मुझे लेट देखने मिली मूवी, तब तक स्पॉइल हो चुकी थी। मैं शायद 3rd वीक पे गया था देखने, पर मज़ा आया। मैं तो 3rd या 4th डे पे गया था देखने। एक गेम से डाउनफॉल आ गया। मादर चोर गेम था, रंडी का पिल्ला वूचैंग जिसने ही बनाया ना, वो चूतिया एक नंबर का। वो चाइना वालों की गाड़ का भोसड़ा। सिर्फ वूकोंग अच्छा गेम बनाया है और बाकी चूतिया है भोसड़ी के। अच्छा डेवलपर शट डाउन हो गए उसके वूचैंग के। और मैं भी तो था ही चूतिया ना। मैं भाई पता है, मैं उस टाइम दूसरे स्ट्रीमर्स को बहुत देखता था ना, तो मैं देखता था ये लोग नए गेम खेल रहे हैं, मेरे को भी नए गेम खेलने चाहिए। अब आज तुम देखो मैं कितना बदल चुका हूँ भाई। अब मेरे को लंड फर्क नहीं पड़ता नए पुराने गेम से भाई। तुम आए तो अपना नया गेम डालते रहो, मैं अपना केसीडी चलाता रहूँगा। अब मैं एक गेम को ही पूरी इज्जत दे के खेलता हूँ, और यही सही तरीका है। विचर 3 को भी मैंने इस चक्कर में इज्जत नहीं दी भाई। विचर 3 मैंने सिर्फ मेन स्टोरी और साइड मिशंस करके ख़त्म कर दिया गेम। उस गेम में बहुत कंटेंट था भाई मेरे लिए, और मैंने इसलिए दोबारा रीइंस्टॉल कर लिया, और मैं बचा हुआ कंटेंट सारा कंप्लीट करूँगा। अब मेरा गेमिंग माइंडसेट चेंज हो चुका है। मैं वो पागल भेड़चाल वाले स्ट्रीमर्स की तरह नहीं सोचने वाला भाई। अब मैं अपनी गेमर इंस्टिंक्ट को जगा के खेलता हूँ। वो गेम के लिए पीनट से दोस्ती तो रही तोड़ दी, उससे वूचैंग क्यों बाय किया करके। नहीं भाई, उसकी क्या गलती भाई, उसने तो अपने लिए बाय किया था। वो तो मैंने उससे बोला था कि मेरे को दे दो। बाद में उसने अच्छे गेम्स भी खरीदे हैं भाई। निंजा गाइडेन 2 खरीदा, जो कि इट वॉज अ वेल इनफ गुड इनफ गेम। उसने बाद में अच्छे गेम्स खरीदे हैं बहुत, और अभी भी वो इस साल भी प्लान है उसके खरीदने का। बस एक गेम उसने गलत खरीद लिया। मैं उसको वैसे कह भी रहा था डाउट कि ये गेम डाउटफुल है कि तुम्हें पसंद है, वो क्रिम्सन डेजर्ट। क्रिम्सन डेजर्ट सच में बहुत झाटू गेम लगता है मुझे। आई मीन उसका ओपन वर्ल्ड है सही, उसका कॉम्बैट अच्छा है, लेकिन भाई वो गेम में ना कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन, मतलब वो गेम सोललेस गेम है भाई। मतलब वो बहुत मतलब बड़ा ओपन वर्ल्ड दे देता है, कॉम्बैट दे देता है, तुम्हें ढेर सारी क्वेस्ट दे देता है, लेकिन इट लैक्स सोल या इमोशनल कनेक्शन विद द कैरेक्टर। मतलब तुम्हें वो इमोशंस फील नहीं होंगे उस गेम में, वो वैसा है। और क्वालिटी नहीं है उसके क्वेस्ट में भाई। उसके सारे क्वेस्ट सेम ही है, पजल कर रहे हो, एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हो। मैंने अपने दोस्त की स्ट्रीम्स देखी, उसने 44 स्ट्रीम्स की उस गेम की। कुछ भी उस गेम में मेरे को वैसा नहीं लगा जो सोलफुल हो। उसने इसलिए खुद सारी क्वेस्ट नहीं करी। तुम केसीडी से कंपेयर करो, केसीडी की क्वेस्ट कितनी वो है भाई, हर एक क्वेस्ट करने का मन करता है। स्टोरी में सोल है भाई, मतलब कैरेक्टर्स में सोल है, स्टोरी में सोल है, एनपीसीज में सोल है।
मतलब तुम्हें बात करना मजा, तुम्हें स्टोरी इंगेज करके रखती है एकदम, इमोशनली कनेक्टेड रहते हो कि हर मोमेंट पे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। वो चीज़ लैक करता है भाई क्रिम्सन। क्रिम्सन डेजर्ट तो आया गया कुछ डिस्कशन यूनिवर्स से आया, तो बाकी गेम्स हुआ प्रैग्माटा डब, वही मैं कह रहा हूँ। क्रिम्सन को इतना लोगों ने सर पे चढ़ाया भाई, विचर 3, किंगडम कम डिलीवरेंस, RDR 2, सबका बाप गेम आ रहा है। अबे किसी का बाप ने उनके बेटे बनने लायक तक नहीं है भाई वो। भाई खाली सा भाई तुमने सब ओपन वर्ल्ड बना दिया, तुमने दुनिया भर का कंटेंट डाल दिया, लेकिन क्वालिटी नहीं है भाई। तुम सिर्फ क्वांटिटी से बात नहीं बनती, क्वालिटी भी चाहिए। कैसे को क्यों बात करे भाई, जब तुम क्वालिटी तुमने सैक्रिफाइस कर दी गेम की। सिर्फ और भाई सिर्फ गेम प्ले डालने से भी बात नहीं चलेगी भाई। अगर तुम्हें सिर्फ गेम प्ले वाला गेम ही चलाना है तो कोई ऐसा गेम बनाओ ना जो डिफिकल्टी पे चलता हो, या क्या बोलते हैं लीनियर हो। लीनियर गेम्स को लोग सिर्फ गेम प्ले के लिए भी खेल लेंगे। लिए ओपन वर्ल्ड गेम में ना तुम्हें अगर बंदों को एंगेज करके रखना है ना, तो कुछ स्टोरी तो देनी पड़ेगी उन्हें। तुम भाई केसीडी में अगर प्लेयर्स में दम ही नहीं है भाई, मैं क्या करूं भाई। मतलब मैं इस गेम में सिर्फ कॉम्बैट, सिर्फ घूमना एंजॉय नहीं करता हूँ, मैं इस गेम के कैरेक्टर्स को भी एंजॉय करता हूँ, उनके साथ जो टाइम जा रहा है वो भी एंजॉय करता हूँ। वो क्रिम्सन में सोल ही नहीं है उस गेम में भाई। मैं इसलिए नहीं खेला वो गेम भाई, मैं जानता था वो गेम नहीं होने वाला ज़्यादा सही। पीनट ने भी रेगरेट किया वो गेम बाय करना, और भाई मैं भी सोच रहा हूँ काश वो ना बाय करता। उसके 4400 बच जाते ना, वो किसी और गेम पे लगा देता और मेरे को वो गेम खेलने मिल जाता ढंग का कोई। Whatever happens, and if it all works out, विचर से देख लो, स्टोरी थी गैराल्ट सीरी को ढूंढने का, और जो बीच में पूरी जर्नी थी, वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन, कैरेक्टर्स, सब चीज़ें डिटेल्ड, उसमें 1% भी। वही तो मैं कह रहा हूँ, उन लोगों ने एक प्लॉट एक ही था, गैराल्ट को सीरी को ढूंढना है, लेकिन उसके चिन्हों ने कितनी स्टोरीज दे दी भाई। ब्लडी बैरन की क्वेस्ट लाइन देख लो तुम, एक चॉइस देख लो भाई, एक चॉइस से तुम्हारी पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। तुम एक चॉइस से किसी की मौत या जीवन पे आ जाती बात। तो आपके पास फैंटेसी वाली पावर्स भी बढ़िया है, एट द सेम टाइम स्टोरी टेलिंग ग्राउंडेड फील होती है। पॉलिटिक्स भी है उस गेम में अच्छी खासी, हर एक डिसीजन कैसे मैटर करता है। तुम्हारे पास कॉइन भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास RPG एलिमेंट्स है, उसका स्टोरी टेलिंग साइड मिशन में इतनी अच्छी है। तो आपके पास क्वेश्चन मार्क्स है मैप पे कि तुम्हें अगर साइड मिशन नहीं करने, तुम बस रैंडमली क्वेश्चन मार्क्स पे जाके उन्हें निपटाओ, क्या है उसमें। केस मतलब विचर में और केसीडी में यही चीज़ है भाई कि इन दोनों गेम्स में ना आत्मा है इन गेम्स में के और उनमें कैरेक्टर्स में, ये तुम बात कर सकते हो क्वेस्ट की। क्रिम्सन में तुम क्या बात करोगे किसी बंदे से भाई कि भाई उस क्वेस्ट में क्या हुआ, तो भाई बंदों को तो याद भी नहीं है उसकी क्वेस्ट में क्या हुआ, बस बंदे मरी हुई आँख से खेल रहे हैं। वो वैसा वैसा गेम लगता है एकदम। क्रिम्सन बोले पहले कहानी नहीं लिखेंगे, पहले ओपन हुआ। वही तो भाई, तुम कहानी है ही नहीं तुम्हारे गेम में। और भाई ये सब मत बोलना कोई कि गेम प्ले मैटर करता है, कहानी मैटर नहीं करती भाई। देखो एक ओपन वर्ल्ड गेम ना, एक ओपन वर्ल्ड गेम में कहानी बहुत लोग पसंद चाहिए भाई। एक ओपन वर्ल्ड गेम भाई कहानी की वजह से ही लोग प्रेफर करते हैं इतना। एक ओपन वर्ल्ड गेम में लोग सिर्फ अंधा एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं खेलते भाई, लोगों को चाहिए रहती है कोई कहानी, एक सोल। लीनियर गेम्स लोग खेल लेंगे अगर बेकार स्टोरी भी हुई तो, क्योंकि लीनियर गेम्स जैसे एक्शन गेम्स हो गए ना लीनियर वाले, बस जाके तुम नॉन स्टॉप उंगली दबा दबा के मार रहे हो, लोगों को उसमें कहानी नहीं चाहिए। बट नॉर्मली हर किसी को कहानी चाहिए। तुम देख लो ना, लोग एल्डन रिंग जैसे गेम में भी कहानी ढूंढते हैं भाई, क्या कैसे मिलेगा, मारिका क्या है, वो मलेनिया की स्टोरी क्या है, रायकाट की स्टोरी क्या है, राडान की स्टोरी क्या है, अपने अपने मेन कैरेक्टर की स्टोरी क्या है। लोगों को एल्डन रिंग जैसे गेम में भी ना, जहाँ स्टोरी समझ नहीं आती है एक बार में, उसमें भी सोल है अपनी एक। एंड RPG गेम्स में तो होना ही चाहिए भाई। तो कह रहा हूँ रोल प्लेइंग गेम, जब तुम किसी की स्टोरी रोल प्ले कर रहे हो किसी कैरेक्टर की ना, तो उसकी कहानी में कुछ होना चाहिए भाई। और उसकी कहानी नहीं है तो उसके रोल प्ले में क्या मजा आएगा। लीनियर गेम्स में भाई भले ही तुम कुछ वो नहीं हो कि तुम्हें वो सब करने की जरूरत नहीं, तो कहानी उसमें बिना कहानी के बाद बन भी जाएगी। अरे बहुत लोग आए लीनियर गेम्स में, लोग नहीं केयर करते भाई, जैसे एक्शन गेम्स में कोई नहीं केयर करता भाई। DMC में नो वन केयर्स अबाउट द स्टोरी भाई। DMC बंदे खेलते हैं सिर्फ फाइट करने के लिए, निंजा गार्डन लोग खेलते हैं फाइट करने के लिए। लेकिन इन गेम्स में तुम्हारे पास स्टोरी तुमको चाहिए भाई, ओपन वर्ल्ड। क्रिम्सन का सिंपल है, वो दैट गेम लैक्स सोल भाई। उतना वो मतलब ज़्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितनों को जानता हूँ सब ने ड्रॉप किया, बस एक ही बंदे ने कंप्लीट किया अच्छे से, तो उसको चलो रिस्पेक्ट है कि चलो उसने अच्छे से खेला। लेकिन वही एक लौता ही है भाई, मोस्ट ऑफ देम ने तो कह दिया भाई ना, नॉट गुड। they'll drag von Berghoff right out of bed. God willing, he'll be sleeping like a log.
And another thing. और भाई अच्छा है ना, अब मैं 2025 की तरह चूतिया इंसान नहीं हूँ, भोसड़ी वाला वो गांडू सवा के मर गया, वो भोसड़ी का गांडू साला चूतिया आदमी। वरना वो भोसड़ी वाला क्रिम्सन डे 1 खेलता, वो चूतिया उठा के, और डे 1 खेल के फिर पूरा कंप्लीट भी करता स्ट्रीम पे, मैं भोसड़ी वालों की तरह। और मैं भोसड़ी वाला काम करता, मैं चूतियों की तरह साला क्रिम्सन कंप्लीट करता स्ट्रीम पे आके, और फिर मैं बोलता यार मज़ा नहीं आया यार, बहुत ही झाटू गेम है। अब आज के टाइम मेरा क्या है भाई, 1 घंटे में दिख गया ना गेम झाटू है, आज तेरी माँ का भोसड़ा, निकल यहाँ से गांडू, चूतिया गेम, लौड़ा साले। फोमो फोमो ना होने का फायदा बहुत है भाई जिंदगी में, द सूनर यू रियलाइज इट द बेटर। वरना भाई अगर मैं 2025 वाला आज होता ना, आज में अगर मैं 2025 वाला होता तो मैं वो साला वो क्रिम्सन भी खेल लेता, मैं प्राइमाटा भी खेल लेता, मैं ये भाई माउस पीआई फॉर हायर भी खेल देता, मैं वो इंडी पिंडी गेम्स फालतू आते वो भी खेल लेता। गॉड ऑफ वॉर भी देख लो अच्छे से, ग्रीक को एक्सप्लोर किए, नॉर्थ पे आए, एक्सप्लोर भी कर रहे, लोअर सब लोफी ने वही तो मैं कह रहा हूँ, गॉड ऑफ वॉर में भी सोल है भाई। गॉड ऑफ वॉर जैसी गेम जो कि जिसका गेम प्ले के लिए ही जो लोग उसको जानते हैं, वहां तक लोगों को उसकी सोल पसंद है भाई। क्रेटोस की पर्सनैलिटी है अपनी, वो लोगों को सोल चाहिए गेम में भाई। भाई कोई बंदा कितना ही बोलते हैं ना गेम में स्टोरी मैटर नहीं करती, मैं सच बता रहा हूँ, आधे से ज़्यादा गेमर्स के लिए स्टोरी मैटर करती है भाई। बिना स्टोरी के लोग गेम एंजॉय नहीं करते भाई। वरना The Devil's Den is no longer safe, so after the attack, we'll pull back to Suchdol Fortress. Any place better than that shithole. अब भाई जरा गेम पे भी फोकस करते हैं। I will read your No chat doubt slowly. Peter Pisek will be delighted to welcome us. He wants to fight Sigismund? Well, here's his chance. Especially since he missed the last skirmish with von Berghoff. Any questions? What about Rosa Ruthard? I hear she's in the tower with von Berghoff. Don't forget to bring a white horse so you can rescue her properly. What should I do? You and Sam come with me. I need your youthful... आज की डिस्कशंस के थोड़े क्लिप्स बना के शॉर्ट्स में डालो, लोगों की आंखें खुले जरा। भाई बंदे बोलेंगे तूने तो गेम खेला नहीं, क्या बक रहा है, और वो वैलिड भी होगा फिर। Zeal. सही नहीं होगा भाई वो, मैंने भले ही जो बोला है वो मुझे सच लगता है, वो सच है भी कहीं ना कहीं। लिटरली नो वन और अर्थ इज सेइंग कि क्रिम्सन की स्टोरी अच्छी है। मेरे दोस्त ने तक बोल दिया कि उसकी स्टोरी कुछ खास नहीं है, साइड क्वेस्ट कुछ खास नहीं है। और भाई जब ओपन वर्ल्ड गेम जो कि भाई 200-300 घंटे का खुद को क्लेम करता है, जब उसमें कोई साइड क्वेस्ट है ही नहीं ढंग की, मैं क्या खेलूँ भाई वो। मैं सच्चा कोई यूबीसॉफ्ट की गेम खेल लूँ भाई, जिसका ओपन वर्ल्ड क्या बोलते ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, बट फिर भी मजा, स्टोरी तो एटलीस्ट अच्छी बनाते। Everything is clear to me. Glad. Pitch up, man! Let's take advantage of the dark and get to Malashop before the cock crows. मैं तो कभी नहीं खेलूंगा भाई वो गेम, क्रिम्सन डेजर्ट बहुत बड़ा गेम है, और भाई लैक्स क्वालिटी, आई हैव मच बेटर ऑप्शंस। भाई वो और होने वाली तगड़ी। Don't know whether he's sprayed me with blood or piss. What, are you mad? We were only supposed to stir things up. What did you think we'd do? Get drunk with them? Torch the village. No prisoners. Look, just wait a moment. What is it, youngster? ये जब से फ्रांसो का ब्लैक में जैसी गेम्स हिट हुई तब से सब डेवलपर्स पे वही को भाई, इन लोगों को भाई वही करना है भाई, बस एक गेम डाल दो, उसमें 10 बॉस डाल दो जो कि 2 हिट में मार देंगे और ख़त्म। कुछ कोई अपना कुछ नया ला ही नहीं रहा, और जब कोई कुछ नया लाए अपना 007 जैसे, तो उसको बोल दो कि भाई मूवी है, ये है वो है। मैं जो 007 इतनी बढ़िया गेम है ना, मैं उसको RE9 से ज़्यादा पसंद करता हूँ भाई। मैं कहूँगा RE9 से मुझे ज़्यादा बेटर बाय लगी इस साल। मतलब मैंने भले ही नहीं खरीदी, लेकिन इट्स मोर वर्थ देन RE9 फॉर मी।
आई गेम्स का क्या है, एक सिंपल है, मतलब एक नॉर्मल फार्मूला है जो कि हर गेम में दिख जाता है। 007 बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है भाई फर्स्ट टाइम के हिसाब से। रिप्लेबिलिटी में अब मैं नहीं कहूँगा कि हाँ रिप्लेबिलिटी में वैसे नया लगे, लेकिन फर्स्ट टाइम जब बात आती है ना तो वो एक पूरा डिफरेंट एक्सपीरियंस है 007। The problem. Do we have to burn down the whole village? What of it? Can't you carry out a simple task? Well, I don't know if... Listen, Von Bergau's in that fortress full of men. When they see the fire, they'll run out to extinguish it. They won't... ये जब से ये तो पढ़ लिया मैं। Expecting us. I never put my men's lives on the line. Especially if I can have the element of surprise. I won't murder innocent peasants, Devil. What? Do you have kin in the village? Who the hell's got into you? This is the way my family was killed. They massacred them. And why? Curva. That's your problem. This is a war. And this is our plan for getting Von Bergau. So if you want to do it your way, fine. You want to be a commander too? Let's see what you're made of then. Can't guarantee you'll survive, though. I can't give you any guarantee either. I don't need one. Hört auf! Hört auf! You madman! Oh! Shit, what the... Missed your turn when they were handing out sense, eh? Hey, Henry! What's wrong with you? Well. The bastard taught the devil to dance. So you won. Yes, I won. रेजिडेंट इवल की ऐसी कम गेम्स होंगी जो स्टोरी में पीक हो, बाकी सब गेम प्ले अच्छा ये सबका। यस आयन की स्टोरी में थोड़ा और वर्क करना था, एंड तक आते आते बहुत जल्दी खत्म कर दिया। कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं किया आखिरी गेम से, बस ग्रेस ऐड किया फॉर हॉरर। हाँ, The stronger dog fucks the bitches. We'll let the turnip pullers live. Hope you know what you're doing. Let none of our fine fellows fall instead of the You damn peasants. because that'll be all your fault. What you gaping at? You never seen a man get his ass kicked before? We'll do it the youngsters' way. The boring way. Leave him. Let him be. Muster up. We'll go round the village to get the अभी जो क्लियर वाली आएगी वो मुझे अच्छी लग रही है। हाँ, बढ़िया रहेगी वो भी। quietly. What's going on, Devil? What the fuck are you doing? Yeah, I had a bit of a disagreement with this brat here. This is your plan? To burn down the village? What of it? We're at war, if you hadn't fucking noticed. There's innocent people there. Do you think I don't know? But better them than us. They'd run for the woods before we started anyway. Are you serious? Sei mich poche, Freund. Sei mich poche. It is the law of God. We are at war here, not those peasants. Fuck this fucking shit. Well, it's too late to go back now. But that fortress is still full of men. There's another way to do this. I'll take care of the first gate. You'll have the element of surprise. Fine, Henry. You've made your bed, now lie in it. But if any of us die today because of you, I'll gut you myself. Fuck. It's almost your time. You need to sneak quietly over the wall, youngsters. It's still dark. That'll give us cover. I'll go with them. I appreciate it, but this is not for you. Easy, Father. We're trying not to die here. I'm giving them my best men. That'll have to do, friend. I'd like to see what they look like. Here I am. Kalani, we got leather.
and other go ahead to check out fortress. Good, Janosch. We'll take care of the drawbridge. And you, Henry, open up the first gate for Zizka. And then we'll storm in there like a fox into a chicken coop. Could you repeat that? We'll climb over the rear palisade and take control of both gates at once. You open the first gate, and we'll take care of the drawbridge at the second one. Exactly. नोलन ने तो एक तो ऐसा नाटक लगाया IMAX में देखना ऊपर से नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट देखने 500 अरे Off you go. No time to waste. Good luck, fellas. Good. The rock isn't so steep from this side, and the patrols are only on the eastern wall. Let's go, fellas. Hey, Samuel. Necafre and come. Hurry. Hey, Samuel. Necafre and come. Hurry. Hey, Samuel. Necafre and come. That is a good place. There? Really? Yeah, there. Necafre and do it already. Yeah. Hey, just at the moment. और वो भी इंडिया में वैसा नहीं होगा एक्सपीरियंस बाहर वाला IMAX से हाँ Otter? Zajmij się swoim ptaszkiem. Hans? You go first. What? And look out. Stop messing about and come on. I must be mad. अभी इतने फॉर्मेट लेके आए IMAX 4DX MX 4D PXL डोल्बी अरे भाई नॉर्मली देखते जैसे पहले देखते थे To hell with it. लोफी तो डे 1 खेलोगे ना नहीं I must be mad. I suppose it was nothing. Alert! Alert! I'm on them! Come on then! They're attacking! Come on here!
मादर खैर मैं आ रही है शायद नेक्स्ट ईयर भाई। मन नहीं है खेलने का भाई, लोगों ने मूड मार दिया है भाई वो बुला बुला के। I must be mad. To hell with it. Now just to open that gate. Attack! They're attacking the castle! Shooters to the walls! You bad luck. Attack! मादर चोद है क्या? भोसड़ी का माँ चोद दूंगा इसकी मैं। Huh? Strange, eh? I must be mad. Bit chilly. I suppose it was nothing. To hell with it. Never mind. Strange. That's out. To hell with it. I suppose it was nothing. Strange. I heard it coming from here. I must be mad. Nothing. To hell with it. I suppose it was nothing. I must be mad. I suppose it was nothing. What? Heard something. जितना लोगों ने बैकलैश दिया लॉफी में, इतना इसलिए इतना मैं इसलिए नहीं अफेक्टेड था क्योंकि मैं अपने लिए गॉड ऑफ वॉर ट्रोलॉजी रीमेक किया। जिसको नहीं खेलनी खेले हो, वही रीमेक ही काफ़ी है। To hell.
someone lying here. My God! Alert! Alert! Ah! Ah! Lying here. Watch out! They attack the... Hey, what are you lying here for? Now just to open that gate. अरे कुछ मेन मिशन तो सुशिमा में भी था, ऐसा कुछ मिशन सुशिमा में भी मुझे उतना पसंद नहीं है। रेपिटेटिव सी गेम, कैप्चर करो बचाओ पूरा गेम इसी पे। हाँ रेपिटेटिव तो है। क्या मिशन था वैसे, मैं समझा नहीं। अच्छा ऐसा है स्टेल्थ, मैं तो ओपन भी कर सकता था। To a bloody pulp, fucker! You're mine! Like a shooting range here! Fucking die, you wretch! Hitting! Behind the wagon! Until they take down that damn bridge! Shoot those bastards! Take cover! क्विल चोरी कर लिया तुमने सबका। यस यार Hold the line! Don't retreat! वो से एम करना बहुत मुश्किल था। फर्स्ट गेम में देखा था भाई, इस गेम में भी आसान तो नहीं है भाई। मैं स्वॉर्ड वाला बंदा ही हूँ यार, वो मेरे बस की बात नहीं। तो कांपता बहुत है भाई इसका हाथ, स्टेबल नहीं रह पाता। I suppose it was nothing.
Charges to open that gate. They're attacking the castle! Shooters to the walls! Come on then! Show your stuff! I'm gonna stick you like the pig you are. Come and get another! Do it! No, you don't! Slow! वो में एक तो क्रॉस हेयर नहीं है खुद से, वही रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है ना उन लोगों ने, इसलिए तो बस स्टेल्थ कर देता हूँ पूरा एरिया। Shoot! Take them down quick! Come on then, you bastards! मादर चौथ क्या है? SDCC है तो मार्वल का कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है कल तक। प्लीज एक घोस्ट राइडर पे कुछ बना दो। SDCC क्या होता है? तो मेरे को फुल फॉर्म नहीं पता। What's that? Shoot! Take them down quick! Ready to... यार मादर चोद भाई। इवेंट जहाँ सब अनाउंस करते हैं, रामायण का भी हुआ था अनाउंसमेंट, वहाँ शायद स्पाइडरमैन से ट्रेलर भी अटैच है। ओके ओके
डबल टेक डाउन होना चाहिए था। Attack! They're attacking the castle! Shooters to the walls! Do it! Come on! You bastard! Ah, fuck! Ah! It's done, bro. क्या हो गया? ये बहुत वायरल हो रहा है सलमान भाई का ट्वीट। अच्छा, यही प्रोटेस्ट पर ट्वीट किया। Must be mad. Strange. Now just to open that gate. सलमान ब्रेक योर फास्ट, इट्स डन ब्रो। आप प्रोटेस्ट पे 2 ट्वीट किए थे। एक ट्वीट पूरा स्टूडेंट के साथ था। सेकंड ट्वीट में थोड़ा अगेंस्ट की हो गया। अब सब प्रोटेस्ट घाव जाओ, गवर्नमेंट ने सुन लिया, अब एक्शन लेंगे, फिर लिखा था सोनम ब्रेक योर फास्ट, इट्स डन ब्रो। Occupy this place quickly. Any man who doesn't surrender. Take cover!
And carnage! God! Smile now! Hold on! Show your stuff! Here! Enjoy! Down you in a flash! Smack him on the head! Behind the wagon! We have to hold out until they take down that damn bridge! Hold the line! Don't retreat! Lost, boys! Just that cannon! We just have to hold on! For Christ's sake, get on with it! Fucking hell! Our lives are on the line! Hit something already! Kubienka! It's like a shooting range here! Fucking bastards! Boys, we still have that cannon! We just have to hold on! God! When the hell will he hit something? Christ! Shoot! We're being searched Shoot hours now! later! Shooting us like fish in a barrel. What is that Kubienka doing? Shoot those bastards! अरे कहाँ से लग रहा है यार? Hold the line! Don't retreat! Go fuck yourself. Take much more of this. Can't those idiots hit anything? Give them time! We're all out of time! Oh. Let's go! Forward! To the top! Let's go! Quick! Forward! Forward! I'll be done with you! Show what you're made of! Let's go, men! Bring things up here! Sam! Ladder! Someone get an axe and turn this fucking door into splinters! Are you still alive? Seems so. I'm glad to see you are too. Come quick. We have to go and see Zizka. What will we do now? Everything's fucked. Von Berghoff is holed up in the tower. He has shooters there, and we're running out of time. We'll have to parley with him. Oi. We're not gonna give up now. That's right. Let's go.
we're going to have a nice little talk with the Royal Chamberlain. Hey, you! Up there in the tower! We want to talk! Listen! Stop shooting! Now we'll see what von Berghoff comes up with. Fuck all! He's trapped! Chamberlain, you are surrounded! I propose you honorably capitulate! He doesn't have a drop of honor in him. Ah! Would you give me one reason why I should do that, Kirkstein? I'm quite comfortable here. I will gladly wait for my allies in Kuttenberg to arrive. You can talk to them. Ah! And you're making a lot of noise. All that shooting you're doing must have been heard in the Hungarian camp. Is there a point to any of this? I mean, we can avoid further trouble. I agree. There is no point to any of this. And on top of everything, it is absolutely inappropriate in the presence of a noble lady. Good morning, Lady Rosa. Lord Capon! Henry! I don't know why we can't make a deal. Ransom would be a good solution for both sides. How is that? But we'll get money and free the king, and you'll have time to change sides once things with Sigismund go to hell. And since you're our prisoner, you won't lose face in the eyes of your League of Lords or Sigismund. And you can still settle your differences with Wenceslas. Damn it. All right. Can you give me any guarantees? Why, of course. Nothing will happen to you. You have my word. Your word, Bjergstein? We're not barbarians, we're noblemen, Sir Otto. Your dead body would be worthless to us. Ha! How sincerely simple, huh, Enoch? But yes, I can trust you. When it comes to ransom, you can always be counted on. Fine. But what will it be, Lord von Berkhoff? You can flatter the devil all you want later. You have convinced me. You're right. It is not in the interest of the kingdom to wage a war against each other. On the contrary, by becoming allies, we can all gain, ensure peace, and liberate our king. Very well. Agreed. We are coming out. हाँ इतनी आसानी से मान कैसे गया ये कुछ ट्रैप तो नहीं ऑटो Ah, how fickle Lady Fortune is. First you're on top, then you hit the bottom. Who would have thought back in the Barkov things would turn out? Come on. Move. What? Did you think I'd have you tortured like you did to me? हो गया Time to settle accounts. You will pay for what you have done. No! He's under my protection. He's a murderer. He deserves to die. Nobody's going to be killed here. wait Fuck! That was a blast. My skull's ringing. The way that Brabant loaded last shot, it nearly blow his French ears off. It is wonder that Fop survived. You got lucky today. You won't next time. अरे उस दिन वाली लड़की भी है क्या एक बार बात की थी हमने रोजा हाँ काफी हाँ वही है The finger of God is fucked, Otto. Sorry, that must have cost the king's ransom. Oh, my lady! Anyway, I think we're all done here. We have what we came for.
Load up the wounded. Anything of value, they're ready to leave. You go ahead. I'll just have a look around here. All right, Henry. Take care. अबे ये अबे मूत रहा है भाई बहुत भाई वो क्या कहाँ मूत रहा है बे कहाँ मूत रहा है बे डांसिंग विद द डेविल बॉडी पे नहीं 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 वो कैनन जिससे कैनन मारी जिससे कैनन मारी थी ना वो बड़ा सा वो ये वाला दरवाजा तोड़ने के लिए ये वाला उस पे ही मूत रहा है मतलब उससे काम भी करवा दिया फिर उसमें मूत रहा है ओराटोर अरे फिर तो यूज में आएगी ना वो चीज अरे भाई फूट चुकी है वो चीज ओराटोर भाई ऑरेटोर के बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चला जाएगा गेम यही चैट जो बड़ी किए एक दो साल पहले जो बड़ी किए एक दो साल पहले जियो को चैट रीड करने में प्रॉब्लम नहीं होती हाँ भाई जियो और आराम से पढ़ पाता और अभी भी स्ट्रीमिंग में लगा होता भाई ऑरेटोर अभी नहीं करूंगा मैं ये शायद क्योंकि जहां तक है ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है अगर ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है तो वैसे वार्निंग आ जाएगी इसके पहुंचने पर लेकिन अभी मेरे को जरूरत नहीं है तुरंत जाने की अभी मैं आराम से अपना टाइम लेके जाऊंगा आज तो नहीं जाऊंगा नेक्स्ट टाइम ही जाऊंगा यहाँ से फिर गेम को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाएगा कि मुझे अब गेम एंड होने वाली सिचुएशन में You! Stop! What's going on? Do tell. All right.
Can you share with a fellow who can't afford a beer? People who like to have a laugh should stick together. No one should go thirsty. Let me see how much I have. Here you go. I should think that'll be enough. Thanks. God bless you. Some people have a heart. I'll have one. दारू के वसूली चाहिए। वाह भाई भाई 50 रुपए लेके चला गया मेरे। भाई केसीडी 2 बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा अब तक। How's trade? I've got the... Thank you very much. नहीं देते तो क्या करता वो? शायद लड़ने लगता, मुझे ऐसा लग रहा। वो तलवार वलवार लेके घूम रहा था। जाता हूँ सोने। कब तक भाई? बस बंद करने जा रहा। हो गया, मेरे को एक मिशन यही करना था। हो गया मेरा। तो पैसे कितने भी देख लो। हाँ पैसे बहुत हैं। Mutt! Here, Mutt! Look what I have for you. Here you go. Take it. Here, Mutt! Look what I have for you. Here you go. Take it. You're my doggy, eh? इसमें भी डीएलसी के लिए पैसे चाहिए? नहीं नहीं, डीएलसी के लिए नहीं चाहिए। ये गेम ज्यादा एक्सेसिबल है भाई। भाई मेरी बस एक डीएलसी बची है यहाँ पर, मिस्टीरिया। ये मैं मेन गेम कंप्लीट होने के बाद करूँगा, क्योंकि मेन गेम कंप्लीट होने के बाद करने के लिए बनाई गई है। ये क्या हुआ? अचानक से कट सीन। Nice work.
I think nightmare है. Nice work indeed. You saved the peasants but sent your own men to the slaughter. You like to keep your hands clean, but war is a nasty business. So who are you going to sacrifice for your conscience PTSD. next? Your little Jew brother? पता है क्या हुआ इस मिशन में? मेरे पास दो तरीके थे. ड्राई डेविल वालों का ये था कि जो पेजेंट्स लोग हैं ना उनके विलेज में आग लगा दी जाए ताकि वॉन बर्गॉफ के आदमी वहां पर चले जाएं देखने कि आग क्यों लगी और हम लोग फिर कैप्चर करें. बट मैंने मना कर दिया वो तरीके के लिए कि इनोसेंट्स को हार्म नहीं करना है. हम लोग डायरेक्ट जाएंगे लड़ने, क्या होता है, फेस टू फेस, जो कि रिस्की अप्रोच है उसके, इसीलिए ये टॉन्ट मार रहा है. Capon, yourself. You play the game, but you don't understand the rules. And in the end, you'll lose. You learned nothing. You understood nothing. And yet I tried so hard. And yet we share the same fate. No! My family was slain too, by the Turks. I felt just like you do. And Eric went through the same thing. That's why I took him in. We're one big family. Of Yes, I'm still here. बटन बंद करने वाला मैं सो रहा था, एक अचानक से नाइटमेयर आ गया इसको. भैया इसीलिए सोने का भी फायदा है. पता नहीं बाद में वरना बिना सोए आता कि नहीं. यार हुआ है ना, लास्ट मिशन में मेरे को कैप्चर करना था वन बर्गॉफ को, ठीक है. तो मैंने वो ड्राई डेविल का प्लान ये था कि वो विलेज में आग लगा के डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा और मैं जाऊंगा कैप्चर करने और हम लोग जाएंगे कैप्चर करने. बट मैंने वो तरीके के लिए मना कर दिया. वो तरीका रिस्की है, मतलब इनोसेंट्स की लाइफ को रिस्क में डालता है. हम लोग वो तरीके से जाएंगे कि हम लोग डायरेक्ट अटैक करेंगे वहाँ पे. तो ये इश्तवान टॉट ये नाइटमेयर में आके टॉन्ट मार रहा कि तुम अपने आदमी को रिस्क में डाल रहे हो वो पेजेंट्स को बचा के. बट वॉर इज अ नास्टी बिजनेस. और भाई नेक्स्ट मेरा क्वेस्ट जो है ना चैलेंजर भाई वो है ऑरेटोर्स है. तो जहाँ तक है आई थिंक इस क्वेस्ट को जब मैं स्टार्ट करने जाऊँगा तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आएगा. एक बार आप कंफर्म करो इसी क्वेस्ट पे आएगा कि अगले क्वेस्ट पे आएगा. मेरे को एक बार बस जानना है. अगर इसी क्वेस्ट पे आएगा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो मैं अब रुक जाऊंगा. कल नहीं करूंगा मैं ये. अगर इस पे नहीं आएगा तो अब मैं इसे कर लूंगा कल पहले और फिर उसके बाद मैं एक्सप्लोर करूंगा बाकी का ओपन वर्ल्ड. अभी वैसे गेम दिखा तो देता है लेकिन मैं फिर भी आपसे एक बार पूछ रहा हूँ. तो पहले से ही मुझे पता हो, मैं जाके देखने की जगह मेरे को पता रहे. तो यार बताना जरा. बाकी आज का मेरा हो गया यार, आज खेल लिया जितना खेलना था. तो मैं प्ले लिस्ट में ऐड करूँगा 45th stream man. Let's go. Kingdom Come Deliverance. वेल मुझे जितना याद है. यस बताओ. Master, a word, please.
No. What'll it be? I'm looking to have a gift made for a friend. पॉइंट ऑफ नो I'd pay a रिटर्न good एक price हाइस्ट for a वाली quality मिशन से blade. आता है। हाइस्ट वाली मिशन से आई थिंक ऑरेटोर्स के बाद होगी फिर वो। Thanks. Bring it over when you're finished, please. Got time, dear. Did you got Rosa and her father free? रोजा को तो फ्री करने को कर दिया मैंने। वो रोजा को मैंने फ्री किया, क्या बोलते हैं, वन बर्गॉफ के साथ। Word about the prop. वन बर्गॉफ को मैंने वो नो किया, क्या बोलते हैं, बोला कि वेंसेस्लास की तरफ आ जाना। या यू कैन सेटल योर डिफरेंसेस विद द किंग वेंसेस्लास के बोल के। बट उसके फादर हाउएवर नहीं दिखाई दिए मुझे। आई एम ट्राइंग नॉट टू गिव यू स्पॉयलर्स। सो यू कैप्चर वन बर्गॉव राइट? यस आई डिड। मेरे को वो उसके फादर नहीं दिखाई दिए भाई कट सीन में। मतलब मेरे को वो रोजा ही दिख रही थी वहां पे सिर्फ। क्या ऐसा हो सकता है क्या मेन क्वेस्ट के भी और आउटकम्स थे? मुझे नहीं पता ही। तो रोजा का क्या किया? बस उसको अपने साथ उसके साथ ले लिए। अब वो लोग कह रहे हैं कि सकडॉल में मीटअप होगा हमारा। सकडॉल आना। ड्यू रोमांस नहीं। आर यू प्लानिंग टू रोमांस? हाँ भाई कर लेंगे यार, ऑप्शन आएगा तो अगर दोनों को कर सकते दोनों को कर लेंगे। मेरे को गेराल्ट बनने में कोई चिंता नहीं भाई। वो रियल वर्ल्ड में गेराल्ट बनना गलत है, गेम में तो भाई चलेगा। That's it. Did you give Rosa her book? हाँ दिया था मैंने, दिया था जब हैंड्स को बचाने गए थे तब दिया था मैंने। और उसने बुक की रिलेटेड कुछ करा भी था ना, क्वेस्ट भी करा हम लोगों ने करी थी। वो कुछ स्टोरी लिख रही थी तो उसमें मैंने उसको बताया भी था मेरा कैरेक्टर कैसा होगा, उसमें क्या कमियां होंगी। All done. ओके सो यू कुड डू रोमांस। वैभव भाई ने तो रोजा को रोमांस किया था। अच्छा वो ठीक है, लेकिन कब करने का ऑप्शन आता है? मतलब मेन स्टोरी में ही आएगा आगे कि मेरे को उसको ढूंढना पड़ेगा? अबे मैं कमीशन करके जा ही रहा हूँ भाई, अब और नहीं खेलूंगा आज। आफ्टर यू फ्री हम फ्रॉम बर्गॉफ। हाँ तो वो तो मैंने कर लिया है, लेकिन किधर कहाँ पे मिलेगी वो? सकडॉल में ही मिलेगी क्या अब? मतलब सकडॉल में ही होगी ना आई थिंक, या यहाँ वाले अपने जहाँ पर थी पहले। बाकी उसके फादर की बात रही, मुझे उसका फादर कट सीन में कहीं नहीं दिखाई दिया।
सिर्फ वन बर्गोव और वही थी फोर्ट्रेस में माले शॉप वाले। I'm sorry. I don't know much about smithing, but this looks like some quality work. Thank you. Happy to help. Bis bald, mein Freund. Don't worry, आगे opportunity आएगा। Okay भाई, let's see that. भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरा केसरी 2 कुछ ज्यादा ही जल्दी एंड हो जाएगा यार। मतलब मैंने इतना कुछ करा है उसके बावजूद। बाबा भाई के 300 घंटे गए थे, मेरे को तो नहीं लगे। मेरे 300 छोड़ में तो 200 ही जा पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। वो क्योंकि भाई उन्होंने पूरा दिमाग लगा के खेला गेम भाई। मैंने ट्रेजर में दिमाग नहीं लगाया। God be. चलो यार ठीक है, बाय बाय। वो आज के लिए इतना ही रहेगा। सी यू ऑल टुमारो, या टुमारो या जब भी मैं आऊँ। बाय बाय।